गाइस हेलो। आज नहीं आया मैं लाइव। सॉरी गाइस, काम में बिजी हो गया था। भाई आज क्या क्या किया, कैसा गया सबका दिन। काम धंधा तो चालू करेंगे ही, लेकिन इसके पहले बातचीत इंडस्ट्री के लोगों से करनी पड़ेगी। हम्म, अरे यार ये तो सेटअप ही नहीं है कुछ। Wait, ये पाँच करना पड़ेगा। हेलो बडी, वेलकम टू द स्ट्रीम। अबे यार ये कोई चैट कर रहा होता है, ये अलग बेगमंगा बना उसमें होता है कि रिप्लाई नहीं दिखता। हम्म। अरे भाई क्या चल रहा है। क्या करना था यार। लोटस कल पढ़ रहे थे ना, बाइनरी सर्च। बाइनरी सर्च में आगे बढ़ना। अब तो भाई तो काम धंधा चालू भी करेंगे, वरना जब तक काम स्टॉप है। स्टॉपेज, स्टॉपेज आ गया काम धंधे पे। क्या क्या किया था। एरे रोटेटेड रोटेशन वगैरह देख लिया था। काउंट नंबर ऑफ डेज वगैरह कुछ तो क्वेश्चन किया था। हाँ वेट वाला कर दिया था। वेट वाला कर दिया था। काउंट हेल्पर फंक्शन ये सब तो हो गया था। हेल्पर फंक्शन कैसे काम करता है। स्प्लिट एरे ऑप्टिमाइज्ड, हाँ ये करेंगे। स्प्लिट एरे लार्जेस्ट सम। चलो ये स्प्लिट एरे लार्जेस्ट सम करेंगे। So we will study the binary search, right? So basically we are learned, and now there is a question called split array largest sum. No, this is not split sub array. Sub array largest sum. Hello, buddy. Hello, guys. What are you currently learning? Are you learning something or not? So basically, there is a question. It is given that what we have to do. It is given that there is an array, right? There is an array, and what we want to do is we want to split that array into multiple sub-arrays. So what is multiple? Multiple means more than once. Okay, so it is given that we have to split it into how many parts? K parts. So it is given that there is an integer array nums, and then there is an integer k. Now we have to split nums into k non-empty sub-array. Okay, so basically what we want to do, we want to split it. Split my array into multiple sub-arrays. And after that, what we have to do, s- empty sub-array such that the largest sum of any sub-array is minimized. Means what we have to do, we have to find the largest among all, and we have to return what is the minimum largest among all. Right. So let's observe this according to this example. 7 to 5, 10 to n case close to 2. Right. So let's see this. So it is, so we will take an array, and in array 7 to 5, 10, 8. So 7 to 5
what 7 to 5, 10, 8. So basically we have to split it. Hello guys. So have you studied binary search? That how binary search algorithm will be implemented? Like what we have to do in this question, it is given that there is an array and we have to consa year. So I'm in fourth year, buddy. I'm in fourth year. Yo, buddy, welcome to the stream. So there is a question, split array largest sum. What we have to do? It is given that there is an array, and what we have to do is we have to split it into k parts, and after divided it into k parts, we have to find the sum of each of these subarray. And from this subarray, we have to take the maximum sum. Okay, after taking the maximum sum, we will divide it into multiple portions. Okay, and from that portion, that we have to find the maximum. What is the maximum element we get? After getting that maximum element, we have to return what is the minimum among all the maximum. Okay, so this is the question. It is given that such that the largest sum of any subarray is minimized. So basically, we have to find the largest sum, and after that, we have to minimize it. So let's understand that what we actually have to do in this question. So suppose if there is an array, it is given that there is an array, and now what we have to do is we have to divide it into k subparts. So basically here k is 2 and we have to divide it into k subparts, right? So suppose if I take this part and this part. So basically we are already divided into two portions. Now we will take the maximum element from this. So we get maximum element as 7 and from this the maximum element will be 10, right? So will we take this, will we take the maximum element or will we have to find something else? So basically it is given that largest sum of subarray is minimized. Okay. So basically we don't have to find the maximum. What we have to do, we have to calculate what is the total sum of this subarray. So total sum is 10 plus 8, which is 18, and then 20 and 25. So basically this is 25 and we will take this 25. So if we consider that what is the maximum sum from both subarrays, so basically this is 25, right? Now again we will split it. So another splitting is like we will take 7 and 2. So if this gives me some 9, and if I take 5, 10 and 8, 5, 10 and 8, it will give me what? 20, 23. So 5, 10 and 8 will give me 23. So again I will take the maximum sum, it will be 23, right? Now I again split it. After again split it, I got 7 to 5, which gives me 7, 2 and 5 is what? 7 and 2, which is 9 plus 5, which is 14. And after that, I will left with this portion. So this will be 10 plus 8, which is 18. 10 plus 8, which is 18. So the maximum sum on this portion is basically 18. And again, we will split it. So we will get 10, 5, which is 15, 15 and 7, which is 22 and 24. So another splitting is 24 and 8. So the maximum will be 24. So after finding all the maximum, we get 25, 23, 18 and 24. And from this, we have to return what is the minimum value, which will be 18. So basically answer will be 18, right? We will see this. If we got 18 as an answer. So first thing that how we actually perform this. Okay. So what is the minimum possibility that what is the minimum sum that we get, right? So before that, what we actually do is that we will take some sum. Let's think about brute force. So in brute force, what we actually do is we will consider that we got one as the maximum sum. So after taking the one as a maximum sum, is there a possibility to divide it into k portions, right? So suppose we will take one, right? We will consider this if we consider the maximum sum to be one, then we can easily divide it into k portions. So I will see that what is the maximum element among them. So the maximum element will be 7.
So I will not split it into two portions because the minimum value that I will get or I have to get will be at least 7 according to the such situation that I have seen here, right? So it means that if I take the minimum value to be 1, then this will not split it into k portion like two portion. Here it is given like two portions. So I will take the minimum value to be 7. So if I take the minimum value to be 7, that if I take 7 are the largest sum, then I can split it into two portion, where in each portion the sum of the elements are 7, right? So I will take 7. So I will take it. After taking 7, uh, I have seen that I have crosses my limit because in one survey I can only put 7 up to 7 value, right? It means yeah, suppose if I have given that I have to create two surveys, in one survey I am initialized that okay, in one survey I can maximum put element which gives me sum up to 7. So I will put 7 here. After that, I will not add any element because after if I add any element, it gives me some greater than 7. So if any value if I add and if it will give me some greater than 7, what I will do? I will push it into another subarray. So I got 2 here, right? I got 2 here, so I will push it inside the another 7. Now after that, I got 5. So I know that 2 plus 5 will give me 7 and it will not crosses the limit, so I will push it into another 7. Now I got 10 here. So I will see that when I add 7 plus 10, it will give me 70. So I am considering one survey size to be 7 and I got 17. So it means that I have to create another survey. So if I create another survey, will I ever put 10 into it? Because the maximum size that a survey can hold will be 7. And now I want to put 10. So I have seen here that I have to make a subarray of at least 10 capacity. Okay, so a single subarray can hold at least some up to 10, right? So again, I will increase my sum up to 10 and I have tell that okay, how many subarrays, whatever the subarray I will create, it will hold the sum up to 10. So after that, I will take again my elements. So I have 7 to 5 and 10 and 8. So I will see that okay, my one subarray will hold the sum up to 10. So I will place 7 here. So this will be less than what 10. So it will put inside first summary. Now after that, if I add 2 into it, then this is also less than 10. So I will put 2 inside it. Now if I add 5, after adding 5, what I have seen here, that if I add 5 here, I will get sum up to what? 7 plus 5, which is 12 plus 2, 14. So it means that my sum will reach up to 14. But the capacity of one server is holding the sum up till 10. So it means that I have to create another server. Okay. So basically this is k is equals to 1 and now k is equals to 2. So what I will do, I will put 5 here. Now after that, I will add 10 into it. Right. I will add 10 into it, but if I add 10 into it, I got sum is equals to 50. But the capacity of the this array will be 10. So this array will not hold the sum up till 50. So I have to create another array. But wait, I have to divide it into only two array, right? So if I create another subarray, it will become three subarray. So basically, if I consider this capacity for a single subarray, I will not put all my elements inside. I will not split array in such a way so that I can split subarray into two parts. Right. So what I have to do, I have to increase the capacity again. So I will increase and make it equals to 11. So if I try to if I try to split subarrays into two parts such that both can hold all the elements, so I will put 7 here, then I put 2 here,
and if I add 5, it will crosses the limit 11. So this is not possible. So what I will do, I will create another subarray. I will store 5 here. After storing 5, I got 10 here. So if I add 10 into it, it will again crosses the limit of a single subarray. So I have to create another subarray. But because I have only two subarrays, I will never create third subarray. So it means that the assuming capacity that a single subarray, if hold the sum up till 11, I can create two subarrays that hold all the elements. So this will be wrong. So it means that I have to again increase the capacity. So what I have seen here is that I will हेलो भाई कैसे हो आप अरे एकदम बढ़िया 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 ठीक है so what I will do I will start from I is equals to 1 and I will increase my capacity till how much size. So if we observe carefully, will the capacity ever crosses the sum of this all subarray? Means it is given, suppose it is given that I have to split my subarray, or if I want to split my array into one part. Okay, one part. And now I want to check that what is the maximum capacity that I can put inside a subarray. So I can put maximum capacity till the sum that is present, right? Oh, okay. So this is the problem statement. Split array into largest sum. So in this question, what we have to do, it is given it is given an array and it is also give the k value. So what is this k? K will tell me that I have to split my subarray. Sorry, basically I have to split my arrays into k parts. And after split it into k parts, right? Like here I will split it. So it is given that k is equals to 2. So I will split it. I will take first element and then I will take this element, this all elements sum. So I have to find, uh, I have to take element and then find the sum of it. And from both the splitting, I have to take the maximum sum. So if I see this, the after two splitting means if I split the array into two parts and take only single element in this and all the elements sum into another splitting, so I will get the sum of these elements to be 25 and the values to be 7. And I will take the maximum of both of them. So it will be 25. Again, I split it. Another possibility is I will split it into this portion. Like first splitting is this and second splitting is this. And then what I will do, I will again calculate the sum of this. So 7 plus 2, which is equals to 9, and 5 plus 10 plus 8, which is equals to 23, and again take maximum of both. So 9 and 23, the maximum will be 23. Again, as I want to split it into two parts, there is one more possibility that I can split it like this. So this is also the one of the possibility. So again, I will split it. I got the sum is equals to 14 and the second split portion is equals to 18. And then again, I will take the sum, maximum sum. So I got 18. Then again, another possibility is I will take this sum and this element. So this is the fourth possibility. So it will give me 24 and 8. The maximum sum will be 24. So after taking all the maximum sum, from this all the maximum sum, I have to return what is the minimum one. Which language do DSA? Oh, I prefer C++. C++. So till now we are observed that this is the basically brute force dry run that how we are thinking, and also we are thinking about that what is the maximum limit till I reach. So when there is an subarray, okay, and inside that there is a given 1, 2, 3, 4, and I have to split it into k is equals to one subarrays. So if I split it into one subarray, I know that this is the maximum subarray, right? This is the maximum subarray. So what is the maximum sum of this? So basically the maximum sum of a single subarray will be sum of all the elements. So when k is equal to 1, the maximum sum, or in any situation, the maximum sum that we can reach is the sum of all the elements. And the minimum sum where we will reach is the maximum of all the elements. Because if I want to split it into, suppose if I want to create two subarrays, right? And what I want to place all my elements. So if I want to place all my elements,
The minimum to minimum capacity of single subarray will be at least the capacity of the maximum element. How do you हाउ डू यू मैनेज जेई इन प्रोग्रेस? जेई जेई नहीं देता भाई, जेई क्यों दूंगा? कॉलेज खत्म होने आ गया मेरा। हाँ, आई completed my I am only one year left for my college. I am in fourth year. Chance of the gain. So basically, what I observe here is that the minimum capacity will be the minimum or the starting point will be at least the maximum of all the elements. So maximum of array, right? And if I see that what is the end point, so what is the maximum capacity? So maximum capacity will be sum of all the elements, right? So in a भाई आप सिस्टम डिजाइन पर भी फोकस करो, बहुत काम आएगा। हाँ कर लिया सिस्टम डिजाइन तो पहले किया था, मतलब जब प्रोडक्ट बनाता तो सब करता था, अब तो छोड़ दिया। कर लूंगा जब जरूरत पड़ेगी तो, रिवाइज ही तो करना आता तो है ही। So So what we are observing here is, okay, I will get the starting point, I will get the ending point. So why we are thinking about binary search here? So when binary search will be applied, are you also focused on development? If yes, then which tech stack you use? So development यार मैं पहले करता था, मतलब 2 साल पहले, ठीक है, 2 साल से कर रहा था और फिर मैंने छोड़ दिया डेवलपमेंट करना बिकॉज ऑफ मैं एक कंपनी में कंट्रीब्यूट करने गया था, एक यूएस की कंपनी है कैल.com। तो उसमें कंट्रीब्यूशन में बस ये प्रॉब्लम है कि उनका कोड बेस कुछ तो मैं कर रहा था, क्लोनिंग वगैरह, और मैं डॉकर से मैंने क्लोनिंग करने की सोची थी क्योंकि वो जो मैनुअल वाली क्लोनिंग थी वो बहुत टाइम लगा रही थी। तो वो हुआ कि डॉकर पे थोड़ा ज्यादा लोड पड़ गया। डॉकर में एक प्रॉब्लम होती है कि अगर अगर तुम्हारा सिस्टम नहीं झेल पाए तो इनडायरेक्टली क्रैश कर जाता है तुम्हारा सिस्टम। तो सिस्टम मेरा क्रैश करने की वजह से मेमोरी लीक होने लग गई। तो ये सब के मारे फिर मैंने छोड़ दिया डेवलपमेंट। इनडायरेक्टली आता है, मैंने सोची थी कि मैं पढ़ाऊंगा, मैंने इस चैनल पे जावा स्क्रिप्ट पे भी डाला था, तुम जावा स्क्रिप्ट का जाके देख सकते हो, आगे और डालूंगा। कर तो मैंने बहुत कुछ रखा है, बट मन नहीं करता। वो है कि कुछ बनाना होगा तो देखूंगा बाद में। चलो अभी तो डीएसए वगैरह पे कर रहा हूँ क्योंकि इसमें उतना कुछ सिस्टम लोड पड़ता नहीं है, तो हो जाता है इनडायरेक्टली। पर जहाँ ज्यादा लोड पड़ा वही खेलने पड़ जाता है। और टेक स्टैक मेरा क्या था, टाइप स्क्रिप्ट, जावा स्क्रिप्ट और नोड जेएस वगैरह। गोलेंग अभी सीख रहा हूँ, हो जाएगा, वो भी हो जाएगा टाइम के साथ साथ। So what we are observing here is, okay, so we get why we are thinking about the binary search. So basically, if we see here that the starting point will be the maximum element. So if we see that if I see 7 to 5 and then 10 and 8, so if we take the maximum element, it will be, if someone is in year BCA, what would you recommend to focus now? सो बेसिकली वो टोटली डिपेंड करता है कि आपको किधर के साइड जाना है। जैसे मान लो कि आपको स्टार्टअप के साइड जाना है, तो स्टार्टअप उतना हायर लेवल का डीएसए नहीं पूछते। ठीक है, तो अगर स्टार्टअप हायर लेवल का डीएसए आपसे पूछ नहीं रहे तो बेसिकली आपके डीएसए स्ट्रांग होनी चाहिए, और सॉरी डेवलपमेंट स्ट्रांग होनी चाहिए। तो डेवलपमेंट के साथ साथ एक और चीज स्ट्रांग होनी चाहिए, वो है आपकी सिस्टम डिजाइन। क्योंकि इनडायरेक्टली जो आपका इंटरव्यू होगा वहां पे आपके प्रोजेक्ट कम देखे जाएगा, आपसे सीधे स्केलेबिलिटी के बारे में बात करने लगेगी। ठीक है, तो ये है स्टार्टअप का सीन। अगर आप किसी एमएनसीज को टारगेट करते हो तो एमएनसी को उतना तुम्हारे प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट से कुछ लेना देना होता नहीं है, वो इनडायरेक्टली तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स चेक करती है। तो वो भी उनके जो पहला राउंड होता है जिसको हम ओए राउंड कहते हैं, ओए राउंड क्लियर करने के लिए अगर आप एक नॉर्मल कंपनी देखते हो, एसेंचर, विप्रो, टीसीएस टाइप की, ठीक है, तो ये आपसे डीएसए के क्वेश्चन पूछती है ओए में।
ठीक है, तो हार्ड लेवल डीएसए मान सकते हो। लेकिन जैसे ही आप कोई बड़ी कंपनी में जाओगे, अमेजोन वगैरह देखोगे, माइक्रोसॉफ्ट के, तो इन सब के जो ओए इंटरव्यू होते हैं, इसके लिए आपको कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि इनके मैथमेटिकल साइड पे ज्यादा होते हैं। और दूसरी चीज ये है कि अगर आप इनका डीएसए राउंड देखोगे तो उसमें हार्ड डीएसए है इनडायरेक्टली। और फिर अगर मान लो कि लास्ट राउंड तक पहुंच गए, तो लास्ट राउंड में फिर इनका ये होता है कि फिर सिस्टम डिजाइन पे बात होगी, क्योंकि इनडायरेक्टली उन्हें ये पता है कि ये बच्चा चेप के लाया है प्रोजेक्ट, दिमाग विमाग उसने लगाया नहीं है, तो प्रोजेक्ट से रिलेटेड बात करने का कोई फायदा नहीं है। तो वो इनडायरेक्टली फिर इन्हीं सब चीजों पे बात करने लग जाता है। गुड इवनिंग सेठ, होप यू आर डूइंग वेल। या बडी, आई एम डूइंग वेल। आज थोड़ा बिजी हो गया था तो मैं शाम को लाइव ही नहीं आ पाया। अरे भगवान, काम धंधा पड़ जाता है बीच में, तो कॉलेज वगैरह का प्रोजेक्ट रहता है, वो सब का भी सीन है। सो so if we see here that what we have to do, that we have to take the maximum element. So if I take the maximum element, so it will be 10 here. And what is the sum of this? The sum will be 10 plus 8, 18, and 220, and 7, 27, and 32. So I got 32 as a maximum sum. So if we see this, which year? Fourth year, buddy. Fourth year. So if you see here, this will basically be the monotonically increasing behavior, right? Like what we have seen here is that in in this question, what we actually do, we will take some element or some capacity, that if I consider this capacity, I can put, suppose if I create a subarray and I tell that, okay, this subarray has capacity to hold sum up till 10. Now I will put all the elements and find the sum of it. And if I see that, okay, this after adding some element, it will crosses the capacity, I will create another subarray. So, and again, I will put inside that. And after putting, if I see that, okay, this bucket is also filled, so again, I will create another subarray. So if I create another subarray, so if I want only two subarrays, and what I've seen here, okay, I have to create another subarray, which is 3. So it means that this capacity is not good. So as this capacity is not good, all the values or all the capacity which is less than this is also not valid. So also not valid means if I create the subarray with the capacity 1 to 9, this is also not valid. So I will cut them also. And now I will search in this area, that okay, I am left with only this portion. So what we are observing here is, okay, so basically this is a monotonically behavior. Monotonic behavior means maybe we can use binary search. So is there any hint that is given in the question that we can use? So there is no hint. So basically, first we apply the linear search. Sorry, the we go n loop, and inside that we will take each element, and after taking, sorry, each capacity, and after taking each capacity, we will check that if this is possible to split somewhere into that portions or not, and we will submit the answer. After submitting, if someone say to optimize it, then we have to show that how it will be monotonic behavior, because binary search will apply only if there is a monotonic behavior, either monotonic increasing, either decreasing, increasing or decreasing. If you see rotated sorted array, then there is also some monotonic behavior. Though, so there we will apply the binary search, right? So we have seen there, okay, there is a monotonic behavior, so that's why we apply binary search here. So, so how we actually perform this, right? So if you want to perform, let's do the dry run. So 7 to 5, half round, 8, and k is equals to 2. Now, what I अरे पी रहा हूँ. What you've seen here is, okay, so we have to take the maximum element will be 10, and then we take the ending points to be sum of all, which will be 32. So 10 plus 8, 8 plus 2, 20, and then 7 and 5, which is 32. So what we do in binary search? In binary search, we find the mid, and this mid be my possible answer. Okay, so according to that, we will check that if this answer is possible or not. If this is possible, I will hold it and then search in another space.
And otherwise, if this is not possible, I will increase or decrease whatever the questions demand, we will do that. So here, what is this 10 and what is this 32? So it will tell me the maximum capacity that one subarray can hold, right? So what I have to do? I have to split I have to split my array into k subarrays such that each subarray will hold some sum. And I have to return that what is the maximum sum, and from maximum sum, what is the minimum one. Okay, so basically this what we have to do, right? So how can we do this? So we will think about it. That what we are observing is, okay, let's consider this. I will find mate 32 plus 10, which is 42 by uh 2, which gives me 21. So I will tell that, okay, 21 is the capacity of my one subarray, that if I put the element and find the sum of it, the maximum sum the one subarray will hold will be 21. So if maximum sum of one subarray will hold is to be 21, then in two subarrays, there is a possibility to divide this all the element, right? So let's create two subarrays. Okay. So two subarrays I will create it, and both have capacity 21. So I will get first 7. Wait, this is not 17, this is 7. So I will take 7, I will put it. So this the sum will be what? Sum will be 7. Now again I will see 2 here. So 7 plus 2, which is 9. Again I get 5 here. I will see that, okay, 5. 7 plus 5, which is 12, and to 14. And after again I will see that 10 here. Okay, so when I get 10, the sum will goes up to 24. But the capacity of one subarray will be only 21. Right? So what I will do, I will put that 10 inside another 7. And again, I will get 8. I will put it here. So what I have seen here, if my one subarray capacity will be 21, then my all elements will be split into two parts. Right? So this will be my possible answer. So will this be my correct answer? No, this will be my possible answer, because what we have to do, we have to minimize it. That what is the minimum capacity of a single subarray, so that I can split it into k part such that all elements can be stored. Right? That what you have to do. So we will store it as an answer, and then what I will do, so answer will be 21. And what I observe here is, okay, if I, which year I am in fourth year. So what happen is, if I get the capacity of 21, and on capacity 21, I will hold all the elements in two subarrays. It means that from 22 till 32, if I get this, if I consider this capacity, then also I can hold the answer, right? Or I can hold all the elements. So I will reject all this, that because I want to minimize it, right? So what I will do, I will do my start as 10, but I will reduce my end, that okay, till 21 this is possible. Now let's check in this range. Well, from 10 to 20, any capacity box is there where I will hold all my elements such that I can split my array into only two parts. अरे यार कोरम में मेरा हाथ चल जा रहा है बाबा तुम करो कोरम में जल्दीबाजी नहीं होता है मेरे से okay so let's again find the mate. So after finding mate, what I will get 50. So again what I will do, I will create two subarrays. Both have capacity 50. Now, what are the element I have? I have 7, 2, 5, 10, and 18. Right. So I will put 7 here, and the capacity will be 15, right? I will put 7 here. Again, I will put 2 here. It will become 9. Again, I will put 5 here. What it become? It become 14. So it become 14. And if I try to put 10 here, this is not possible, because it makes the sum up to what? Sum up to 24. So it means that I have to put this 10 inside another bucket. So I will put it inside another bucket. This bucket has also capacity 50.
So if I try to put 8 here, it will become some 18, but the capacity is 15. It means that what I have to do, I have to create another subarray. But wait, it is given in the question, I have to split it only into two subarrays. And now what I will do, I will create another subarray, which will not be possible. So it means that if I create a subarray with capacity 15, then there is no way I can store all the elements in two subarray. So what I will do, it means that if I take the capacity from 1 to 14, this is also the invalid answer because there is no possibility to create the subarray of 14 capacity such that I can split my array into two parts so that each element can be stored. So it means that I have to increase my range. So what I will do, I will check my range and increase my range from 16, and as end will not change, it will again be 20. Again 20. After that, I got 36. So 36 divided by 2, which will get, I will get 18. So let's see 18 here. So if I create the two bucket of 18 capacity, will I put all my elements? Will it be possible or not? So I will put 7 here and 2 here and 5 here. So it will become 14. So as the capacity will be 18, till this point it is fine. भाई आप कौन से ईयर में हो? I am in fourth year, buddy. I'm in fourth year. So, okay, so I put all my elements. Now, if I try to hold 10 here, this is not possible because this subarray has capacity only up to what? 80. So, if I add 10 into it, it will become 24. So, this is not possible. So, I will put that element inside another bucket. Now, I will also store 8 here because the maximum capacity a single subarray has will be 18. So, it can hold the sum of the element. So I will see that, okay, if I consider single subarray has capacity up till 18, then there is a possibility that I can split my subarray into two parts. भाई तू समझेगा मेरी बात? हाँ भाई, क्यों नहीं समझूंगा? और selected on campus offer say 42 LP on paper with 6 month internship plus PPO, but now they are saying it's a non-tech role, even though the interviewer for tech. Is this acceptable? इंटर्न का स्टाइपन 1 लाख पर मंथ बट सीन है भाई व्हाट इफ नहीं हुआ पीपीओ। एक सेकेंड, क्या? सेलेक्टेड ऑन कैंपस ऑफर से 42 LP ऑन पेपर विद 6 मंथ इंटर्नशिप प्लस पीपीओ बट नाउ दे आर सेइंग इट्स अ नॉन टेक रोल इवन दो द इंटरव्यू टूज वर्क फॉर टेक। इज दिस एक्सेप्टेबल? इंटर्न का स्टाइपन है 1 LPA बट सीन है भाई व्हाट इफ नहीं हुआ पीपीयू, मैं फंस ना जाऊं फिर रेज्यूमे में क्या लिखूंगा टेक के लिए। इनडायरेक्ट मोटिव क्या है? पैसा कमाना। बट बेसिकली ये वाली जो चीज है, तो पैसा तो सही मिल रहा है पर रोल नहीं है, और रोल क्या है ये भी नहीं पता। पैसे तो कुछ ज्यादा ही है। अगर भाई मेन मकसद ये है कि भाई पैसा कमाना है, तो भाई करो। और मेन मकसद ये है कि भाई नहीं मेरे को तो टेक में ही कुछ करना है, तो भाई ये जॉब थोड़ी रिस्की है क्योंकि फिर इसमें तुम जोड़ोगे क्या? फिर टेक से रिलेटेड तो काम अगर नहीं हुआ तो इनडायरेक्टली टेक का तो कोई एक्सपीरियंस तब भी नहीं होगा भले तुम उसमें 10 साल काम कर लो। हाँ। जीडी जीडी होता है? जीडी, ग्रुप डिस्कशन। was off campus many of them almost in fact। तुम ये कर सकते हो कि इस कंपनी को ज्वाइन करके तुम अपनी अलग से प्रिपरेशन करो क्योंकि इनडायरेक्ट एक बार कंपनी इंडस्ट्री में तो घुस ही जाओ। तो तुम ये कर सकते हो कि एक बार इंडस्ट्री में घुस जाओ और ऐसा कोई बॉन्ड वॉन्ड मत बना लेना कि मतलब 2 साल फंस गए। ये है कि बस चले जाओ और उनका जो भी है काम वाम करो और अपना साथ में टेक का प्रिपरेशन करते रहो, 6 महीने निपट जाए।
ठीक है, थोड़ा सा अपना क्या कहते हैं वो सब बन जाए, क्या बोलते हैं नेटवर्क वगैरह, तो स्विच मार दें किसी टेक वाले, ये कर सकते हो। ये चीज कर सकते हो, ये वन ऑफ द ऑप्शन है कि हाँ जॉब करी थी बट टेक की नहीं करी थी। तो ये है कि इनडायरेक्ट तुम्हें एक्सपीरियंस मिल जाएगा इसका, और दिखा सकते हो कि हाँ काम तो किया है पर टेक का नहीं। ये वन ऑफ द पॉसिबिलिटी है, तुम कर सकते हो। ओके, सो what I've seen here is okay, the minimum capacity I will get is 18. So I will store 18. And now I know that if I consider the capacity from 19 to 32, then also I will store all the elements. So it means that I don't have to consider from 19 to 32 because I want to minimize it. So what I will do, I will reduce my capacity to 17. कंपनी का देख में भाई. Okay. So I've seen here, okay, start will be again what? The start will be 16 and end will be what? End will be 17. So again, if I find mid, I will get the mid to be a 16 here. So will I get 16? Yeah, 16 plus 17, which is 33 by 2, which is 32.5, which is 32. So, and after that, I will divide it by 2, I will get 16 only. So after getting 16, I will say that, okay, so single sub-array's capacity will be 16. Will I hold all my elements into two sub-arrays? Will it be possible or not? So I will put 7, 2, and 5. So this will give me 14, and the maximum capacity will be 16, so I can hold it. After that, if I try to add 10, this is not possible, so I have to create another subarray. I will store my time in there. Now I will also not store 8 here because it will crosses the limit, which will be 16. So I have to create another subarray. But wait, I only have the permission to create two subarrays, but where I will create the third subarray. भाई हाँ, है भाई, मैंने तो कंसल्टेंसी में देती है। कंसल्टेंसी का तो भाई पता नहीं क्या सीन होता है। हाँ, so okay, so this is not the possible answer because what I've seen here is okay, I have to create another subarray if I consider the maximum capacity of mid is equals to 16, right? So what I will do, I will increase my starting point because all the value which is less than 16 also not possible. So start is equals to 17 and end is equals to 17. Now, if you see that if I create another subarray, two subarrays, will it be possible to hold all the elements? So it will be 7, 2, and 5, which gives me 14. And for 10, I have to create another. And if I want to add 8, it will become what? It will become 18. But this capacity will only up till 70. So this is not possible. I have to create another subarray. So if I want to create another subarray, this is not possible. So it means that this is also not the possible answer. So what I will do, I will increase my capacity. So if I increase my capacity, the start will become 18 and end will become what? End will become 70. So this is not possible because start must be lesser than equals to end. And here start is greater than end. So the maximum answer that I will get will be what? 18. So 18 will be my answer. Will 18 be my answer? Yeah. So what I actually do, I know the range. Start is equals to what? The maximum element among all. Maximum element among what? Norms dot begin. Norms dot begin, comma norms dot end. Okay, and now int end is equals to what? If I see end is equals to sum of all the elements, so accumulate, and then I copy this again, comma 0. Okay, I have to find the maximum element. Okay, now what I will do?
what I will do, I will take an answer which is equals to start, and now I will apply the binary search. Okay, int कोई बात नहीं. Start by 2, and now what I will do, I will check if this is possible capacity or not. So I will create another function which will tell me if this capacity is possible or not. And if this capacity is possible, inside answer, I will store whatever the mid, and then I will reduce the capacity because what I want to minimize the capacity. That what is the minimum capacity so that all the elements should be stored in two subarrays. Here it is given that 2. I have to check that how many subarrays it actually given in another question, right? So start is equals to mid plus 1. And now what I will do, I will return something, return answer. Now, in this is possible function, what I will pass? I will pass whatever my mid is. Also, I will pass whatever my array is. And also, I will pass that, okay, this is the amount of subarray in which I have to split, right? So, let's create is possible. So, this will tell me if this is possible or not. Is possible, is possible, possible, and int mid, comma vector, int, and end nums. And how many subarrays I want to split? It's k. So suppose I will consider that, okay, initial the subarray will be 1, right? Initially, the first subarray I will create. And initially, what I will do? I will check that what is the sum. So basically, I have to check, or what I actually do is I will create a bucket. Okay, so the bucket will be this mid value because this is the maximum capacity in which I can hold the sum. So what I will do, I will store each element inside a bucket and check that what is the current sum. So sum plus x. And now if I see that, okay, now my sum will be greater than the maximum capacity of the bucket. So what I will do, I will create another survey. So it means that I will increase the sub. After increasing the sub, if I see here, what I will see? So wait, if I see that sum is greater than mid, it means that I create another subarray. And if I see that I will create another subarray, right? Another subarray, what I will do? If I see that, okay, wait, let me think out. Now I will create another subarray. And if I create another subarray, then again I have to calculate the sum. So what is the current sum here? So the current sum will be x, right? I will again start it. Why it will be x? Because what I've seen here, that I store 7, then I store 2, and then I store 5. Okay. So after storing 5, in next subarray, from where I will start counting again. So I will start from 10. It means that on current element where I will standing, after adding that element, I will see that okay, sum will exceed it. So what I will do, I will store that current element inside another subarray. Right? ब्रो कौन से कॉलेज में है भाई? कॉलेज का नाम नहीं ले सकता भाई क्योंकि फालतू का कॉलेज को काहे के लिए पॉपुलैरिटी दो. पैसा तो दे नहीं रहा कॉलेज. लेकिन ये है टायर 3 कॉलेज. So, okay. So if I see that, okay, sub-array will exceed the limit. So what limit? So if sub-array will exceed the total amount of sub-array that I want to create limit, then what I will do, I will return false that this is not possible. This answer is not possible. And otherwise this answer is possible. So I will return true here. Okay. मेरा कॉलेज का टायर पंचर. वो टायर 3 का सबका ही टायर पंचर रहता है. टायर 3 पंचर है पूरा. Yeah.
This answer is accepted. Ah, so, so have you understand that what I have explained here? Maybe you understand this. अरे भगवान। बाइनरी सर्च के यार क्वेश्चन तो ठीक ठाक है, वो पता नहीं चलता कि इसमें बाइनरी सर्च लगेगा। वहां तेरे जैसा क्वेश्चन होता है बिल्कुल। That what I am observing that binary search ढूंढना is little bit difficult कि क्वेश्चन में लग कैसे जाएगा बाइनरी सर्च। अभी आगे दो तीन ऐसे क्वेश्चन है बिल्कुल ही उड़ ही जाएगी उसमें कहाँ से बाइनरी सर्च लगा दो। Okay, so this is the question that we actually completed. I've done this, I've done this. The time complexity will be the log of some minus x, right? So because that is the ring only. Book allocation, interpartition, aggressive cow. So will there be a question? Magnetic force between two walls. Okay. ये कौन सा पीडीएफ है? ये मेरा खुद का पीडीएफ है यार, मैंने खुद के पढ़ने के लिए बनाया है। आह, ये कोई प्लेटफॉर्म वेटफॉर्म का नहीं है, मेरा खुद का ही है। सो बेसिकली ओके, सो एग्रेसिव काउ, राइट? एग्रेसिव काउ। What we have to do in this question? ये पहले हार्ड था, अब जीएफजी पे इजी मीडियम में आ गया, आई डोंट नो क्यों। क्वेश्चन तो यार बढ़िया क्वेश्चन है, उड़ा देगा एकदम। ओके, सो व्हाट वी हैव टू डू इन दिस क्वेश्चन? लेट्स अंडरस्टैंड। ओके, लेट्स अंडरस्टैंड। 1 2 4 8 9, ओके, 10 1 2 7 5 k is equals to 3। 10 1 2 7 5, 10 1 2 7 5 k is equals to 3। So what we have to do in this question? It is given that this is the stalls। स्टॉल्स मीन्स अगर कोई हिंदी में समझे तो खूंटा। यहाँ पे गाय को बांधते हैं ऐसे, ये गाय है। और ठीक है, ये बेसिकली ये मेरी एक गाय है और मैंने गाय को बांध दिया है खूंटे से। ठीक है, बट द प्रॉब्लम इज ही इज टू एग्रेसिव एंड आई हैव टू मेनी काउस। लाइक इट इज गिवन दैट आई हैव 3 काउस। एंड मैं क्या करता हूँ कि इन गायों को जब खूंटे में बांधता हूँ, ठीक है, तो ये बेसिकली ये क्या दिया हुआ है, उसकी पोजीशन दी है कि खूंटा कहाँ कहाँ पे है। तो ऐसा मान सकते हैं कि ये एक नंबर लाइन है, ये 0 1 2 3 ऐसे करके पोजीशन है, तो वहां पे एक क्या दिया है, जैसे एक यहाँ पे है खूंटा, है यहाँ पे है, ऐसे ही करके मतलब रेंडमली नंबर दे दिए। हाँ, थैंक गॉड। तो बेसिकली ऐसा कुछ है। तो अब ये है कि ये जो मेरे पास 3 गाय है, ये गुस्सैल गाय है। ठीक है, बेचारी गाय, क्या बेचारी गाय को तू ले गई। हाँ भाई, रुको भाई, ये लो भाई, ये है, ये अब हो गई भाई, 4 पैर हो गए। सो व्हाट यू हैव टू डू दैट, इट इज गिवन दैट ये जो गाय है भाई गुस्सैल। सो मुझे क्या करना है, इन गायों को बांधना है। ठीक है, ऐसे बांधना है कि सच दैट वो एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे रहें, ताकि उनके बीच में लड़ाई ना हो। ठीक है, तो मुझे ये पता करना है कि बेसिकली कि मैं गायों को एक एक डिस्टेंस पे बांध। ठीक है, तो कुछ कुछ डिस्टेंस पे बांधूंगा जिनके उनके बीच में लड़ाई नहीं हुई। ठीक है, तो मान लो कि मेरे पास एक खूंटा ये दिया हुआ है, इसको अगर शॉर्ट कर दूं तो 1 2 3, 1 2
5 दिया हुआ है और 7 दिया है एंड 10 दिया है। तो मैंने एक गाय को यहाँ बांध दिया, ठीक है, ठीक है, और दूसरी गाय को मैंने यहाँ बांध दिया, ठीक है, और तीसरी गाय को मैंने यहाँ बांध दी। तो अब ये बात है कि मैंने तीनों गायों को बांध तो दिया, लेकिन ये कि इस क्वेश्चन में ये दिया है ऐसे बांधना है कि वो एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे हो और सारी गाय बंध जाए, ठीक है। तो मेरे को यही रिटर्न करना है कि वो मैक्सिमम डिस्टेंस कितनी होगी सच दैट मैं गायों को सबसे दूरी पे बांध पाऊं, सारी गायों को, ठीक है। तो यही है एग्रेसिव काउ काउ जो क्वेश्चन है कि what I have to do, I have given this stall number and I have to place my cows on these stalls, and I have to place my cows such that between two cows there is a maximum distance and I have to place all my cows in this distance. Okay, so let's consider a situation that I have only two cows. Okay, or if I have only two cows, and now I want that if this both cows not fight with each other, what I will do? I will place it at the maximum distance. So where I will place? So I will place my first cow at 1 and my last cow or my second cow at the maximum distance, right? So that they will never fight with each other. So, so the maximum distance here it is given that, or here we will return is okay. So the maximum distance will be 9. So if I place my two cows, with I want the maximum distance so that it will be in maximum distance and all my cows should be placed. Because what I want to place all my cows, right? So that's I want. Okay, right? So if we see the brute force approach, what we actually do in a brute force approach, what we will do, okay, we will consider that if I will see that what is the maximum distance. So basically this is the stall number. So the maximum distance will be the distance between the maximum and the minimum, right? So the maximum distance that I will get will be, I will place my first cow, and after that if I want to place my second cow, I can place it a maximum up to 9 distance. Because after 9 there is no stall, so I will not place my second cow. And if I see that what is the minimum distance among all, so the minimum distance will be 1, right? Because the minimum distance so that my all cows should be placed, so that so where should I put my all cows? So I will put my all cows in the distance gap between 1, right? So let's start this, or I will consider that okay, if I have 3 cows, so I will consider the distance of 1. So if I place all my cows at distance equals to 1, then all the cows should be placed, and this is the maximum distance till now. So okay. So okay, let's see. So what is the situation? Oh, okay, what is given that 10, 1, 2, 7, 5. So basically I have to sort it 1, 2, 5, 7, and 10. Right. And now how many cows I have? I have cows equals to 3. So I have seen that okay, if I have to place my 3 cows. So I put my cow 1 here, and now after distance 1 I will put my cow 2 here, and now I will see here okay, so there is no one distance, and if I see the distance between both these two stalls will be what, both the two stalls will be 1. So oh, sorry, not 1, basically it will be 3, so I can place my third cow here. So the minimum distance where I should place my cow will be 1. So if I get the minimum distance which is greater than 1, so I can place my cow, right? So I will place my third cow here. So I will see that, okay, so distance is equals to 1 if I consider what I've seen, all my cows should be placed. And in the question, it is given that I have to maximize the distance. So, okay, if I take the distance is equals to 1, all cows should be placed. Now, if I want to maximize it, let's consider another distance. So I will see that, okay, distance, if I consider, I will consider the distance is equals to 2. Now again, I will try to put my cows. So I will put C1 here. And again, what I will see, I want distance equals to 2. So basically the distance between them will be 1. So I will not put here.
I will put this cow on this position. So my C2 will be placed here. And now if I see the distance between 5 and 7 will be 2, so I will put my third cow here. Now, yeah, what I have seen here, I have seen here, okay, I will put my all the cows if I consider the maximum distance to be 2. Now let's check whether distance is equals to 3, right? So if I consider the distance is equals to 3, what I have observed. So let's put my first cow here. Now I will try to put my second cow. Now if I want to put my second cow, will I put it here? No, because the distance between them will be only 1 and the minimum distance I required will be 3. So I will put my second cow on this, right? Now after that I will see, okay, what is the maximum distance between them? So I will see that the difference between them will be 2, but I want to place my third cow after 2. Okay, or the minimum distance between two cow will be 3. So will I put it here? No. So I would put it on 10. So what I've seen here, okay, if I consider a distance is equal to 3, I will put all my cows. So what I will do, I will increase the distance. After increasing the distance and make it equals to 4, I will put my first cow here. Now I will see that, okay, I want the distance between the two cows will be at least 4. So I will put my C2 here. And now will I put my third cow on 7? No, because the difference between 7 and 5 will be 2. So basically I will put my third cow on this. Now we'll see that, okay, distance is equals to 4 here, right? Distance is equals to 4 here. Now I will increase the distance because with the distance is equals to 4, I will put my cows at maximum distance. So I will increase the distance. So after increasing the distance, I will put my C1 here. Now, what I have observed, I want the maximum distance between two cows will be at least 5. Okay, right? So will I put my second cow here? No, because the distance between 1 and 5 will be only 4. So I will put my cow on 7 only. So I will put my C2 here. Now after that, I want to place my third cow. So if I want to place my third cow, the maximum distance will be 5, right? So I have to put at its maximum distance. So it means that 7 plus 5. If I see that 7 plus 5, which will be 12. So there is 12? No, I will get 10. So basically this is less. So what does it mean? That if I consider the maximum distance of 5, I will not put all my cows. So what is the answer basically? So answer will be 4. Well, the answer will be 4. Yeah, the answer will be 4 if you see it. So that's what we have to return. Okay. So how we actually solve this? So if we really want to solve this, what we are observing that we take each value, right? We take each value and then we will try that we can place my cow there or not, right? So if we see that what is the maximum or what is the minimum distance where should we place my cow? So the minimum distance will be 1. And what is the maximum distance? So maximum distance will be maximum element minus minimum element. Okay, so that's it, the maximum distance. So which will be 10 minus 1, which will be 9. So if you see here, this is the monotonically increasing behavior. Because what I have observed here, suppose if I take maximum distance to be 5, and now what I observed that okay, if I consider the maximum distance between two cows will be 5, so that I will put all my cows, and if at 5 maximum distance, if I not list all my cow, then at 6, 7, 8, 9, there is no possibility so that if I consider that to be a maximum distance, I will put all my cows in my what? In my stall. So basically, I have rejected half of the portion and I only left with half of the portion. So what we are observing here is this is a monotonically increasing behavior, right? And also we can reduce half of the search space just by governing that what we have to do, right? So let's do it. So first what I will do, I will mark that 1, 2, 5, 7, 10, and now I have given that 3 cow. Right. And now what I will do, I will take the maximum minimum, sorry, start to be 1.
and n to be what? And to be n to be the difference between the largest and smallest, which will be 9. Now I will find mid. After finding mid, I got 50. So I placed my first cow here, C1. After that, so I will mark that, okay, I will place one of my cow, which is 1, at 1. After that, I will jump to next element. I will check, will the distance where I placed my previous cow till this is greater than mid. So if I subtract 2 minus 1, which will give me 1, and will 1 is greater than 5, because I want the maximum distance so that I can put my second cow. So that second cow where I have to put, it should be greater than equals to this mid value. So I have seen here, okay, I got 2 here. So 2 minus 1, which is 1. So the maximum distance between, if I put my second cow here, the maximum distance between two cow will be only 1. But what I want the maximum distance between two cows to be 5. So I will not put here. Now again, I will jump here. What I've seen here, that okay, 5 minus 1, which is equals to 4. So will I put my second cow here? No, because the maximum distance between two cow will be what? It will be 5 minus 1, which is 4. And what I want to be a maximum distance, it will be 5. So that's why I will not put my cow here. So I will again jump to the next element. What I've seen here, okay, I got some element and now subtract it from the position where I put my first cow. So 7 minus 1, it will give me the value, which is 6, and this will be greater than 5. So if this is greater than equals to 5, what I will do, I will place my second cow, right? I will place my second cow and I will increase the count. Okay, I have placed my second cow here. And now again, what I will do, I will jump to next element. So after jumping to next element, what I have seen here, that I will again check the distance. What is this current distances? So after getting the current distance, I will subtract where I will place my previous count. Right, where I will place my previous count. So after check that, okay, my previous count is placed at 7 and this will be 10. So if I subtract, I will get 3. So after getting 3, what I have observed, that I want the maximum distance to be 5, but this distance is 3. So my all cow is not placed. So I will check if the cow that I have to put, if it is not equals to or not greater than equals to how many cow that I have to put, it means that I have to return false, that this maximum distance is not possible. Right, this maximum distance is not possible. So I will return false. And if I return false, it means that all the value that is present after that, like 6, 7, 8, 9, 10, that is also not possible. So if that is also not possible, what I will do, I will return. So it means that I will remove that search space and only I will search in left area. Right. So this is what we are doing. Again, it means that start will be 1 and end will be what? End will be 4. So again, I will find the mid. Again, I will find the mid. I got mid 5 by which will be 2. So with the 2, will there be possibility to place all my cows? So I will put my first cow here. Now I see that, okay, the distance between them is 2. No. So I will see that, will the distance between them is 2? Yeah. So distance between them will be greater than equals to 2. So I will put my second cow on this position. I put my first cow here. I'll put my second cow here. And now I will jump to next. Here I will see that, will I put my third cow here? So basically the difference between two elements should be greater than what? Should be greater than my mid value. So mid value is 2. So greater than equals to 2. So I will put my third cow here. So what I have observed here is, okay, I will place all my cow. So if I placed all my cow, what I will do? I will increase the maximum distance, so that, because what I want to increase the maximum distance, or I want to find the maximum distance where I would uh what where I should place my cows, right?
So what I will do, start is equals to 3 and then end is equals to 4. So again, I will perform this, that I will find that, okay, mid will be equals to 3. So with the maximum distance up to 3, will I place all my cows? So let's see. So I will place my C1 here. Now I see that will the maximum distance between them is 3? No. Will that maximum distance between them is 3? Yeah. So I will place my second cow here. Will the maximum distance between them is 3? No. So I will not put here. Okay, so C3 is not putting here. I will see again. Okay, will the maximum distance between them will be 3? Yeah, it will be 3. So what I will do, I will place my third cow here. So if I place all my cows, it means that this is the possible answer. Okay, so I will store it, and again I will, as I want to increase the maximum size. So what I will do, I will make it equals to 4 and end is equals to 4. Right. And after that, with the mid value is equals to 4, I will again check with the capacity or with the maximum distance of 4, will I place all my cows? Yeah, I will place all my cows. So let's see, I will place C1 here. Then I will see, okay, will the maximum distance between them is less greater than equals to 4? No. Will the maximum distance between them is greater than equals to 4? Yeah. So I will place my second cow. Will the distance between them is greater than equals to 4? No. Will the distance between them is greater than equals to 4? Yeah. So I will place my third cow. So it means that with this also, I can place all my cows. And what I will do with this mid value, this is possible. So I will store it as an answer. And now again, I will increase the start and end is equals to 4. So if start will become greater than equals to end, I will stop the loop. So this is my possible answer. And if you see here, 4 is to be answered. So what I actually do, I will take start and start is equals to what? Start is equals to what? Now what I will take end. So end is equals to what? End is equals to I have to find the maximum element and the minimum element. Before that, I have to short. I have to short what? ARR dot begin, comma, ARR dot end. I will short it. After shorting, yeah, buddy, binary search. Binary search. So after shorting, what I have to do, I have to take whatever the ARR n minus 1 minus ARR 0, right? And I have to take n is equals to ARR dot size, and that's it. And while start is less than equals to end, int mid int mid mid is equals to start start plus end minus start by 2. And if I see that if with this distance is it is possible, uh what mid ARR k, I will store it as an answer. Why एंड में इंडेक्स स्टोर करना है ना? नहीं, यस वाले बताया तो मैंने. I've already explained that why I store the maximum because if there are only two cows and after sorting, I will place my first cow here and last cow here, right? So if I place my last cow here, what is the maximum distance between two cows so that I can put them? So the maximum distance will be what is the last stall? Maybe it will be equals to 20, right? And if I have only two cows, so I will place my first cow on 1 and second cow on 20. Right. So it will not depend on index. It will totally depend on what is the position of the stall here. Right. So that's why I have taken this, whatever the element weight. So after taking as mid, and now what I want to increase the capacity. I want to increase the distance else and is equals to mid minus 1.
Return. Return what? Answer. Hmm, int answer is supposed to start. So I don't know what I have to do here, but let's see what I will do. So bool is possible. Is possible. So what I have to take? I will take int mid. So mid will be the basically the distance. So I will take this as to be distance. Then there is vector in int nums, and then there will be int k. So basically these are the cows. So I will count that. Okay, cow will be equals to 1. So I will place my first cow. So where I will placed, I will put it what distance? This place. So I will put the place. Place is equals to initially I will put my first cow at the nums 0. Okay, and now I will start moving. I need to see the problem from start. What? ये रहा question. Like, yeah. Int place is equals to, and now after that, what I will see that where should I place my cow? So int x. So will I start it from 0? No, I will start it from 1. No? So for because I place my first cow. So int I is equals to 1, I is less than n. Will I have to write n? No, nums dot size. Nums dot size I plus plus, and after that, what I will do, I will place my second cow. And if when I will place my second cow, if I see that the whatever the current value that I got, after that I will subtract the place. And if it is greater than equals to whatever the distance required, it means that I will place my second cow. Place is equals to nums I. And also what I will do, I will increase the cow plus plus. That okay, I will place all my cows. So if I see that okay, my cows that I want to place will be greater than equals to k, it means that I place all my cows. So I will return what? I will return that okay, this will be my possible answer. So this will be a possible answer. So I will return true here. Okay, because I place all my cows. Otherwise, what I will do, I will return false here because there is no way I can place all my cows. Cow. Oh, what the hell? Where the fuck is else? Else, okay, okay. Yeah. So I think so. This must be accepted. Yeah. This is accepted. And if I copy this code, same code here, and there is a similar question. Wait, there is a similar question on LeetCode also, which is called magnetic force between two balls. This one. So this is same as the aggressive cow. Here, what we have to do, we have in a universe Earth C-137 rig discovered a special force of magnetic force between two balls. If they are put in a new invented basket, कैमरा थोड़ा बड़ा वाइट मोड देख पा रहा हूँ कैमरा बड़ा कर लो भाई मैं मोड देख सो बेसिकली अगर मैं ये कोड कॉपी कर देता हूँ और ये इस पॉसिबल वाला फंक्शन ये यहाँ लिख देता हूँ ठीक है ये जो भी है और ये सेम कोड दिया हुआ है
इसको यहाँ पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे ये नम्स की जगह ये बेसिकली क्या है ARR कर देता हूँ और इसको के कर देता हूँ और ये नीचे वाला जो भी है उड़ा देता हूँ। आई थिंक सो दैट्स इट। सिमिलर ही क्वेश्चन था, बस उसका नाम दूसरा था। एग्रेसिव का हुई ये भी दूसरे नाम से। अरे ये क्या पड़ गया, पेंटल ग्रेड या तो दो बुक एलोकेशन ऑफ पेंटर पार्टीशन सिमिलर टू दिस, कह सकते हैं, बट थोड़ा सा डिफरेंस है। मतलब उनमें वैसा वाला कॉन्सेप्ट लगता है, जैसा क्या कहते हैं उसके अंदर क्या बोलते हैं यार वो शिप पैकेज वाला। पर ये थोड़ा एग्रेसिव का वाला जो कॉन्सेप्ट है इसमें बस थोड़ा सा वेरिएशन है कि इसमें मैक्सिमम, इसमें मुझे क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है और उनमें मिनिमाइज करना है। ये तुम्हारे PDF डिस्कॉर्ड पे है? अरे नहीं, मेरा यही यूट्यूब चैनल पे ही जाओगे तो वहाँ पे कम्युनिटी पोस्ट में डाला था, आज ही डाला था भाई। पीछे भाई उसमें मैंने शायद 2D एरे और DP नहीं डाला है। बाकी सब तो मिल जाएगा, डाल दूंगा वो भी। अभी थोड़ा पढ़ना है, उनको भी रिवाइज करना है। वो नहीं। हाँ भाई, यू आर इन विच, आई मीन फोर्थ ईयर बड़ी, फोर्थ ईयर। ओके, ये तो हो गया, ये तो हो गया। वही पड़ी है, अच्छे से प्रॉब्लम है जिसमें मैं ही घूम गया हूँ। ओ, फाइल्स, कोको इचिंग बनाना। ओके, कीप इट अप, थैंक यू बडी, थैंक यू सो मच। सो कोको, कोको इचिंग बनाना। Okay, so it is given that Coco loves to eat banana. There are n piles of banana. The ith pile has piles I bananas. Okay, so basically it is given in the question that there is an array where the ith pile represent that how many how many banana that a single pile will contain. It means that ये ऐसे केले का गुच्छा है कुछ, और भाई ये जो भी केले वगैरह है, ठीक है, तो ऐसे करके कुछ है, ये बेसिकली इसको पाइल्स बोलते हैं, पाइल्स ऑफ सिंगल पाइल्स। ओके, सो ये मेरे बनाने को कुछ, या आई एम फ्रस्ट्रेटेड, चूज रॉन्ग कॉलेज, व्हेन डिड यू, ओके, कैन यू एक्सप्लेन एग्रेसिव काउ अगेन, एग्रेसिव काउ अगेन, ओके वेट वेट आई विल एक्सप्लेन, वेट। फ्रस्ट्रेटेड, आई चूज रॉन्ग कॉलेज, कॉलेज से बड़ी कोई उतना लेना देना नहीं है। कॉलेज जाओ, वो जितना दे रहे हैं उनका कंप्लीट करके उसको साइड कर दो, फिर अपने ऊपर फोकस करो, दैट्स इट। कॉलेज तो भाई तुम्हारा क्या, बहुत लोगों के खराब है, क्योंकि आपको इन्वायरमेंट वैसा नहीं मिलता और वो पागलपंती ज्यादा करते हैं कॉलेज में, अटेंडेंस और ये और तीनों पांच। ठीक है, सो इनडायरेक्टली अपने ऊपर फोकस करो। और ये है कि अगर कोई डाउट वगैरह है, पढ़ना वढ़ना हो, तो मैंने ये चैनल इसलिए खोला है कि आपको कोई भी डाउट वगैरह आता है, आपको पढ़ना वढ़ना रहता है, आप यहाँ पे आ सकते हो, डिस्कस कर सकते हो। ओवरऑल इम्प्रूवमेंट होना जरूरी है सबका। हम्म, सो सो बेसिकली इफ वी सी, ब्रो आप कौन से ईयर में हो भाई? ब्रो आप कौन से ईयर में? आई एम इन फोर्थ ईयर बट भैया आई एम इन बेनेट यूनिवर्सिटी। बेनेट यूनिवर्सिटी वैसे ठीक ठाक है, उसको बड़े ऐड आते हैं। मुझे इंटरनल नहीं पता कि ये कैसा कॉलेज है, बट अगर अगर ऐसा हो रहा है कि भाई कॉलेज ढंग से, मतलब ये है कि तुम्हारा डेड ही होता जा रहा है सब कुछ, तो भाई
आज एक टाइम पे कॉलेज का ये कर दो कि भाई ठीक है, कॉलेज का जितना काम हो उतना निपटा के अपना काम कर। ऑफ कैंपस या ऑन कैंपस अपॉर्चुनिटी देख रहे हो? हेलो। हेलो बड़ी। मैं यार अभी तो अपॉर्चुनिटी ही नहीं देख रहा हूँ। मतलब बेसिकली वैसे देखा जाए तो अपॉर्चुनिटी, और ऑन कैंपस से तो कॉलेज से तो मैंने अपना वही कटवा दिया, प्लेसमेंट से नाम ही कटवा दिया। बस ये मैं ऑफ कैंपस के भरोसे ही हूँ, अपने भरोसे नहीं है। आपको कोई इंटर्नशिप मिला? हाँ मिली थी, की नहीं। पैसे नहीं देते ज्यादा। और ये डीएसए वगैरह में देते हैं, तो अभी डीएसए मेरी उतनी स्ट्रांग नहीं है, तो मैं भी उसी के लिए बेसिकली प्रिपेयर कर रहा हूँ। डेवलपमेंट वगैरह में की थी, बाहर भी अप्लाई किया था, बाहर वही डीएसए, एक ही कौन सी कोई कंपनी थी उसमें अप्लाई किया था। 2 राउंड क्लियर हुए थे मेरे जावास्क्रिप्ट और टाइपस्क्रिप्ट वाले, लास्ट राउंड में उन्होंने केएमपी एल्गोरिथम का क्वेश्चन पूछ दिया था, तो मैं डीएसए करता नहीं था, निपट गया था। आई मीन सेकंड ईयर, प्लीज गाइड मी हाउ टू गेट इंटर्नशिप। इंटर्नशिप लेने के लिए भाई तुम्हारे पास दो ऑप्शंस हैं। एक स्टार्टअप ऑप्शन है और एक एमएनसी ऑप्शन। जब आप स्टार्टअप के साइड जाते हैं, इनडायरेक्टली आपको ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा इंटर्नशिप के लिए। अगर आपको अच्छे पैसे चाहिए, जैसे ज्यादा, अगर ये है कि 5,000 7,000 10,000 में काम हो जाएगा, तो फिर आपको एक नॉर्मल कोई भी स्टार्टअप मिल जाएगा। ठीक है, बस वो थोड़ा आपको घूमना पड़ेगा, या थोड़ा इंटर्नशाला वगैरह ये सब जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं वहां पे 50 60 कंपनीज में अप्लाई करो तो कहीं ना कहीं मिल ही जाता है। आपको ये है कि अगर हाँ स्टार्टिंग में बहुत बढ़िया पैसे चाहिए, 1 1.5 लाख रुपए, तो इनडायरेक्टली आपको ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा, अगर आप स्टार्टअप साइड देखते हो तो। अगर आप एमएनसी साइड देखते हो तो भी आपको ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा, प्लस डीएसए भी करना पड़ेगा, और साथ में लिटिल बिट कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग। तब जाके आपको एमएनसी में आपको इंटर्नशिप मिल पाएगी, क्योंकि मार्केट ऐसा ही है। तो फिर जॉब इंटर्नशिप कैसे करोगे? जब करनी होगी तब कर लूंगा, है तरीके हैं मेरे पास बहुत सारे। हाँ अभी मन नहीं है तो नहीं कर रहा। मतलब अपने इंटरेस्ट से काम करता हूँ मैं, बाद में जिस दिन मन करेगा जॉब करने का उस दिन मिल जाएगी। अभी मन नहीं है। Okay, I will explain what is binary aggressive cow. So in an aggressive cow, it is given that what we have to do, we have to place the cows. So basically, it is given in the question that we have given the stall numbers, right? What it is given that we have given stall numbers, and what भाई अगर क्या करूं, वही अगर 7 8 हजार चाहिए तो डायरेक्ट अप्लाई कर लूं या क्या? हाँ भाई बिल्कुल। अगर आपके पास स्किल्स वगैरह हैं, बेसिकली अगर आप डेवलपमेंट साइड देखोगे तो, अगर ये है कि थोड़ा कम कंपटीशन के साथ चाहिए तो जेंगो गोलैंग में से कोई कर लो। ठीक है, इसमें थोड़ा कंपटीशन कम है, और अप्लाई करो ये इंटर्नशिप, इंटर्नशाला, ये सब जो प्लेटफॉर्म होते हैं, ये मेरे एक दोस्त को मिल गई थी 10,000 की। ठीक है, तो उसने 50 60 कंपनीज में अप्लाई किया था, मिल गई थी उसकी। मिल जाती है, मतलब ये है, अप्लाई बहुत ज्यादा करना पड़ता है। Okay, so in an aggressive cow, it is given that we have given the stall numbers, and what we have to do, basically, these stall numbers represent that what is the distance, that where, what is the actual position, where this cow should be placed. Okay, and now we have 3 cows. It is given in the question that we have 3 cows, and now what I want to place all this cow so that they can never fight with each other। आ, 1 2 3 का क्वेश्चन सॉल्व करोगे क्या भाई अभी? मुझे देखना है बस अप्रोच कैसे कर रहे हो उसको। फॉर एग्जांपल पाथ क्वेश्चन, तो क्वेश्चन पाथ सम क्वेश्चन है। अच्छा, पाथ सम क्वेश्चन। यार अभी मेरा ट्री तो बिल्कुल भी रिवाइज नहीं है, लेकिन मैं ट्राई कर सकता हूँ। पाथ सम मतलब क्या, कि जितने भी ट्री में जितने एलिमेंट्स हैं उनका सम निकाल, या क्या करना है? ऐसा कुछ।
भाई अभी तक तो कोई स्किल नहीं है, पास किया है फर्स्ट ईयर, सो कौन सी सीखूं, सो इंटर्नशिप ले लो। भाई आई वॉज वरीड बिकॉज लॉस्ट माई स्कॉलरशिप। अरे टेंशन नहीं है भाई। भाई यार कोड फोर्सेस या लीड कोड लैब, मुझे डीएसए स्ट्रॉन्ग करना है। हम्म। देखो भाई, सर्च इट ब्रदर, आज सब क्या क्या था भाई। भाई ये बता दो। अरे हाँ भाई, ये एक मिनट यार, एक मिनट, एक एक करके बताता हूँ। तो सबसे पहले भाई ने पूछा था कि अगर ऐसे कहो, वो बताता हूँ, फिर उसके बाद मैं तुम्हारा बता देता हूँ क्या, कौन सी स्किल। हाँ तो बेसिकली स्किल्स में देखोगे तो भाई, जेंगो या गोलेंग, जेंगो या गोलेंग इन दोनों में से कोई एक बैकएंड टेक्नोलॉजी सीख लो विद डेटाबेसेस। ठीक है, तो इनडायरेक्टली आपको इंटर्नशिप मिल जाएगी, कंपटीशन कम है इसमें। ठीक है, और दूसरी चीज क्या है भाई, यार कोड फोर्सेस करूँ या लीड कोड, लाइक मुझे डीएसए स्ट्रॉन्ग करनी है, मेरा अभी कोड फोर्सेस पे 1112 रेटिंग का हो जाता है क्वेश्चन। हाँ तो बेसिकली ये है कि डीएसए, डीएसए इतना करो कि मतलब उसके जो कॉन्टेस्ट वगैरह पे ज्यादा ध्यान देना, और कोड फोर्सेस ज्यादा करो, क्योंकि इनडायरेक्टली ओए क्रैक करना पड़ेगा इंटरव्यू के लिए। और ओए में भाई साहब, ओए तो क्रैक करने के लिए आपको कोड फोर्सेस कोड सेव करना ही पड़ेगा। ओए तो भाई डिफिकल्ट है एक इंटरव्यू से भी ज्यादा। हाँ तो सचिन ब्रदर, ओके, तो बेसिकली बाय नेचर, ओके। So in an aggressive cow, if we see here, it is wait, where I started. Okay, it is given that we have given a position, and now what I want to place all my cows, right? I want to place all my cows. So what I will do, I will try to place it. भैया से कौन से कॉलेज, कौन सा कॉलेज देता है यार। अरे मैं कॉलेज नाम नहीं लूंगा, पैसे नहीं देता कॉलेज। मेरा टायर 3 है। ठीक है, so basically what I want to place my cows, and basically this is the position where I will place my cows, and now I have three cows, right? So I have three cows, so what I will do, I will, if I want to place it, first I will short it, that okay, my first position is this, second is this, now I have third position this, fourth one is this, and fifth one is this. Now what it is given that I have to place my cows. So if I see this, I can easily place my first cow here, second cow here, and third cow here. So I can easily place it. By path some, भाई, हाँ भाई, ये इन्होंने बोला था, इसको जरा समझा देता हूँ, फिर मैं देखता हूँ। क्योंकि भाई लेकिन इतनी कोई गारंटी नहीं है मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरा अभी 0% हो रिवाइज है, बिल्कुल भी आइडिया ही नहीं है मुझे कुछ। लाइक देखा जाए तो मैंने 2 ढाई महीने पहले टीएसए चालू किया था, और मैंने बस लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए, अब मैं वापस पढ़ रहा हूँ, तो ये पढ़ते पढ़ते एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि मेरे को देखना है कि मेरे को खुद भी आया है कि नहीं। करता हूँ, मैं करता हूँ। So it is given that I have to place my cows. So I will place my first cow here, second cow here, third cow here, right? But it is given that these cows are aggressive, so I have to place them at the maximum distance. Hmm. Uh, buddy, I have given my Twitter and LinkedIn profile on the description. You can contact me there. Okay, so I have to. So basically, these cows are aggressive, and what I want to place that cows at the maximum distance. Okay, so I want to place that cows in a maximum distance. So let's consider this maximum distance to be 1. So hypothetically, I assume that okay, I will place all my cows at minimum maximum distance to be 1, so that I can place all my cows. And if I somehow place all my cows, I will increase the distance. Okay, so I will take, okay, if I consider the distance is equals to 1, I will place my cow. So I will place my first cow on this distance, and after that I will check what is the distance between the two stalls. So I will see that okay, distance will be 1. So the maximum distance where should I place my second cow will be 1. So I will see that okay, distance will be 1. I will place my second cow here. And after that, I have to place my third cow. Now again, I will see that okay, the this stall distance is 2 and this will be 5. So I will find the maximum distance. So basically what I will do, I will find the distance between them. I will see the distance will be what? 3.
and what is the maximum distance that I would consider. So I would consider 1. So if it is greater than equals to the distance that I would consider, I can place my third cow. So what I observe here is, okay, I have given 1, 2, 5, 7, 10 positions, and now I want to place my three cows, and I can easily place my three cows if I consider the distance to be 1. So that what I would do. So this is the possible distance. So I will increase the distance. I भाई डीएसए क्या भाई डीएसए चीट कैसे करूं डीएसए स्टार्ट कैसे करूं डीएसए का यार पहले अपने तो लेक्चर निपटा दो कि सारे टॉपिक्स आपको आइडिया लग जाए लेक्चर वगैरह देख के खत्म कर दो सीख लो और उसके बाद उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करना और फिर कोड फोर्सेस को छूट जाना दैट्स इट फिर कोड फोर्सेस के लिए आपको जो उसमें और भी अलग अलग टॉपिक्स होते हैं आपको जीएफटी वगैरह में मिल जाएंगे वहां से पढ़ पढ़ के कॉन्टेस्ट देना है बेसिकली भाई आप क्या करते हो कोड फोर्सेस या लीड कोड डीएसए स्ट्रॉन्ग करने के लिए दोनों भाई दोनों मैं कोड फोर्सेस लीड कोड और तीसरा क्या है एक फोर्स है तो वही करता हूँ सो बेसिकली ओके so I will consider okay with the distance maximum distance to be 1 I should place my all the cows now I will increase the distance so I will increase the distance and it will become 2 so I will check that okay with that maximum distance up to 2 can I place all my cows so I will see that okay yeah I will place my first cow here and the maximum distance oh sorry the difference between them will be 1 so I will not place my second cow here because the maximum distance where should I place my second cow at least must be greater than equals to the whatever the distance that I would consider. So I've seen that the distance between these two stalls will be 1, so I will not place my second cow here. So I will check that, okay, what is the maximum distance between first and 5? So I will see that, okay, distance will be 4, so I can place my second cow here. And now again, I will see that, okay, what is the distance between 5 and 7? So it will be 2. So I can place my third cow here. So with the distance equals to 2, also I can place, uh, yeah, buddy, it's easy. It's easy if you start it from today on. Huh, okay. So what I have seen here, okay, with the distance equals to 2, this is possible. Now what I will do, I would increase the distance. I would increase the distance, make it equals to 3. Again, I follow the same procedure and add the distance equals to 3. This is also possible. Then I will see that, okay, distance equals to 4. Then I can also place it. So I will again increase the distance. When I increase the distance, when I increase the distance up to 5, I will see that, okay, I can only place two cows. It means that I am left with one cow. So this is not this answer is not possible. So it means that if I consider the distance equals to 6, 7, 8, 9, 10 up to so on, that is also not possible to place all my cows. Right? So this is the brute force approach, right? This is the brute force approach. So what we are observing here is, okay, at some point I got the answer and after some point I will not get the answer, right? After some point I will not get the answer. So भाई बैकएंड कैसे करूं डीएसए को लूज ना करे लास्ट क्वेश्चन बैकएंड कैसे करूं कैसे चालू करूं बैकएंड के लिए पहले भाई तुम बेसिक बैकएंड की सब लोग सीखते हैं नोड जेएस वगैरह वो सीख लो ताकि तुम्हें बैकएंड का आइडिया लग जाए कि बैकएंड होता कैसा है बेसिकली लॉजिक बिल्डिंग पे काम करता है बैकएंड और उसके बाद फिर ये देखो कि कौन सी टेक्नोलॉजी चल रही है मेरे हिसाब से तो अभी बैकएंड में गोलैंग और जेंगो में थोड़ा सा कंपटीशन कम है बिकॉज ऑफ वो हार्ड है थोड़ा सीखना ठीक है तो तुम वो प्रेफर कर सकते हो क्योंकि हार्ड चीजें ज्यादा लोग करते नहीं है तो उसमें हमेशा कंपटीशन कम ही रहता है तो तुम वो प्रेफर कर सकते हो ठीक है और उसमें ये या फिर जावा भी प्रेफर कर सकते हो क्योंकि जावा भी हार्ड है कंपटीशन कम तो इनमें से कोई भी प्रेफर करके उस लैंग्वेज को सीखो बस हो गया काम हम्म, पहले नोट कर लो कि बैकएंड का आइडिया लगे कि बैकएंड होता क्या है कैसा होता है और उसके बाद फिर दूसरी कोई भी एक लैंग्वेज पकड़ लेना और उस लैंग्वेज को पकड़ के उसका बैकएंड सीख जाना चाहे वो गोलैंग चाहे जेंगो चाहे जावा दैट्स इट भैया डीएसए के लिए स्ट्राइवर A to Z कर लूँ हो जाएगा क्या मेरा अरे हाँ ये एक चीज क्लियर कर दूं देखो भाई दुनिया की कोई भी चीज
तुम्हारा सिलेक्शन नहीं करा सकती। क्यों? उसका एक रीजन बताता हूँ। आप कोई इंटरव्यू होता है, ठीक है, इंटरव्यू में बहुतों को ये लगता है चीट करने से हो जाएगा, ठीक है। बेसिकली क्या है कि अब कंपनीज पहले जैसी नहीं रही हैं जैसी वो एक दो साल पहले थी। 2 साल पहले वो एक स्टैंडर्ड डीएसए के क्वेश्चन पूछते थे जो एक शीट में प्रेजेंट रहते थे। अब वो एक नॉन स्टैंडर्ड डीएसए का क्वेश्चन पूछते हैं। नॉन स्टैंडर्ड डीएसए का क्वेश्चन वो होता है जो तुम्हें किसी शीट में नहीं मिलेगा। इनडायरेक्टली वो तुम्हें कॉन्टेस्ट में मिलेगा और मैथमेटिकली इंट्यूटिव होगा वो बहुत ज्यादा। समझ रहे हो? तो मैथमेटिकल इंट्यूशन बनाने के लिए आपको इनडायरेक्टली जितने भी लेटेस्ट कॉन्टेस्ट होते हैं, ठीक है, चाहे वो कोड फोर्सेस का हो गया, चाहे वो कोड शेफ का हो गया या लीड कोड का हो गया, आपको वो क्वेश्चंस करने आने चाहिए। ठीक है, वो क्वेश्चन कर दोगे तो बेसिकली आपका हो जाएगा। हाँ, तो ठीक है, करता रहो। करो ना भाई, एक्सप्लेन करना। ओके, so what I've seen here, I will get the brute force approach that at some point I will stop. Okay, so what I have observed here is that, okay, after, sorry, before 4 I get the answer, and after 4 I will not get the answer. So it means that I will reach up to some threshold, and after that I will not get the answer. So if I observe something, okay, so it means that if I consider the line, at some point I will get the answer, and after some point I will not get the answer. So this is something like what? This is something like binary search or monotonic behavior. Like how this is a monotonic behavior. So first we will observe that what is the minimum distance where should I place my cow? Two cows. So the minimum distance will be one. And now what is the maximum distance so that I can place my all the cows? Okay. So right, suppose if I have only two cows, the maximum distance where should I place my two cows will be I will place my first cow here and second cow here. So what is the maximum distance between them? It will be 10 minus 1. So suppose if this stall number is 20, so what is the maximum distance between them? So it will be 20 minus 1, which is 90. So it will not depend on index, right? It will not depend on index. So basically what I've seen here is that, okay, starting value will be what? So starting value should be 1. And what should be ending value? So it will be whatever the last element minus what is the first element after sorting. Because what I want the maximum element and I want the minimum element. Right? इतना क्या क्या प्लान है? जॉब करोगे या फिर मेरे फैमिली बिजनेस नहीं है? फैमिली बिजनेस नहीं है भाई, इतना डीएसए करके बिजनेस थोड़ी करोगे। अरे डीएसए तो मैं इंटरेस्ट के लिए करता हूँ, मजा आता है करने में इसलिए। दिमाग चलता है यार, वरना दिमाग बंद हो जाएगा तो काम ही बंद हो जाएगा सारा। इसलिए करता हूँ मजे के लिए। जॉब वॉब के लिए ऐसा कोई प्रेफरेंस नहीं है। जॉब वॉब की टेंशन भी नहीं। इतनी स्किल्स आती हैं कि अब 1 महीना बैठूंगा तो लग जाएगी। कौन सा बता पास आउट हो? कौन सा नहीं, पास आउट नहीं हुआ अभी यार। अभी तो मैं आया हूँ 4th ईयर में जस्ट। Okay, so I will see that what is this? This will be basically the monotonic behavior because this is increasing. Okay, this is increasing monotonic behavior. And suppose if I get that, suppose if I get 10, I will consider the maximum distance up to 10, that I will place my two cows at the maximum distance of 10. So if I get that, yeah, I can place it at the maximum distance of 10, it means that I can also place this cow from 1 to 9. This is also possible. So I will, as I want to maximize it, I have to check only in this region, that from 11 to 20, right? So, क्या काम करते हो? कुछ नहीं। या सर्च स्पेस मिल गया, या सर्च स्पेस, आई गॉट द सर्च स्पेस. So after getting the search space, what I will do? So, right. So, wait, I have solved this question, no? Yeah, I have solved this question. So according to this problem, like which problem? This one, 1, 2, 5, 7, 10. This one, 10, 1, 2, 7, 5, k is equals to 3. K is equals to 3. What I will do? I know the maximum distance will be 9 and the minimum distance should be
what? Minimum distance should be 1, right? So I will find the mid. After finding the mid, what I will do, I know that this is the maximum distance where I have to put my cows. So, okay, so what I will do, I will place my first cow. After placing my first cow, I will jump to next element. I will see that where should I place my first cow. So I will place my first cow at 1, and now I will check what is this distance, what is this element, or what is this stall number. So I will see that, okay, this stall is 2. So where I will standing and where is my previous cow has been booked, I will check that what is the distance between that stall and my current stall. So it will be 1. So what is the maximum distance that I would consider? I would consider it to be a 5. So will this be equals to 5? No. So it means that I will not place my second cow here. So I will jump to next element. Again, I will do the same thing. Will the distance between them is greater than equals to 5? No. So I will not place my second cow here. Then I jump to the next element. I will see the will the distance between this and my previous cow where I placed it is greater than equals to 5? Yeah. So I will place my second cow here. After that, I jump to the next index or next element. I will see that if I placed my say, if I, okay, so I will jump to next element. After that, I will check where should I place my previous cow. So I will place my previous cow at 7. Right. So what is the maximum distance that I would consider? I would consider to be what? 5. So what is the distance between that? Where should what is the distance between my previous cover placed and my current distance? So it will be what? It would be 10 minus 7, which is 3. So will I place my third cover here? No. So what I observe here is okay. If I consider the maximum distance to be 5, I will not place all my cows. Okay, so after 5, if I try to place my cows at maximum 6 distance, this is also not possible with 7, with 8, with 9, with 10. This is also not possible. So what I will do, I will reduce my search space with what? With mid minus 1. Now I will only left with 1 to 4. That if I try to place my cow, the maximum distance will belong from 1 to 4 only. So again, I will find the mid. After finding mid, what I have seen here, okay, I got mid. So I will consider the maximum distance should be 2, right? So maximum distance should be 2. So I will place my first cow here, and now I would check, okay, what is the distance between where I would place my first cow and this? So it will be 1. So will I place it? No, because the minimum distance that I would require will be 2. So after that, I jump to this one. After jumping to this one, I would see, okay, what is the maximum distance between the previous cow and my current element? So it would be 4. So will I placed my second cow here? Yeah. So I will place it. So my C2 is placed here. After that, I jump to next one. I will see where is my previous cow placed? It will be placed on 5. So again, I will check what is my stall number. It will be 7. Will the difference between the previous cow position and my current stall is greater than equals to 2? Yeah. So I will place my third cow here. So it means that I would place all my cows if I consider the maximum distance to be at 2. So what I would do, I would increase the distance because what I want to maximize the distance. So it means that I will increase the start. So now my start become 3 and my end become 4. It means that if I place all my cow, what I will do, or if I consider 1 and 2, it means that with 1 also I can place all my cows. So I will left this both search spaces and I jump to the 3. That from 3, is it possible or not? So I would bound up to 3 to 4. So I will again find the mid. Now mid become equals to 3. And if the mid become equals to 3, I can again check with mid is equals to 3. So fine. So now the maximum distance would be 3. I will place my first cow. And now I check the difference between two. So it would be 1. Will I place my second cow? No, because I want the maximum distance up to 3 and more than 3. So I have seen here, will this be distance equals to 3? No. After that, I will check, will this be distance equals to 3? Yeah. So I will place my second cow here. Now, after that, I will check, okay, well, I place my third cow here. No, because the maximum distance must be greater than equals to 3. So this distance will be 2. I will not place it.
So again, I will check that, okay, 10 minus 5. Will this distance is greater than equals to 3? Yeah, so I will put place my third cow here. So this is my possible answer. Okay, so I will store it and again I will maximize my size. After maximizing, I will see that, okay, start is equals to 4, end is equals to 4. I will find mid is equals to 4. So I will try to again place my cows. So I will see that, okay, I will place my first cow. I will see what is the distance between them. The distance is 1, so I will not place my cow. After that, I will check, will this be distance is greater than equals to 4? Yeah, I will place my second cow here. And again, I will check, will this distance be greater than equals to 4? No. Will this distance be greater than equals to 4? Yeah. So I will place my third cow here. So this is also my possible answer. Again, I will increase my start and it will become 5. So when start is greater than end, I will stop the loop and whatever the possible answer I already stored, I will return it. So answer will be 4. So hope you understand. भाई but I got 9 CGPA. भाई CGPA कॉलेज प्लेसमेंट में मैटर करती है, ऑफ कैंपस में तो नहीं करती है। डीएसए स्टार्ट करना है, कुछ बताओ। डीएसए स्टार्ट करना है तो भाई आपके पास दो ऑप्शंस है, या फिर तो आप डॉक्यूमेंटेशन से पढ़ लो। तो डॉक्यूमेंटेशन से पढ़ोगे तो जीएफजी डॉक्यूमेंटेशन फॉलो कर लेना, वहां से पढ़। दूसरा आपके पास ऑप्शन है कि आपको लेक्चर से पढ़ना है क्योंकि मे भी समझ में नहीं आ रहा। तो लेक्चर में आप एक हिंदी में समझना हो तो भाई, हिंदी में समझना हो तो कोडर आर्मी एक चैनल है और इंग्लिश में समझना हो तो स्ट्राइवर है। ठीक है, इन दोनों में से आप किसी को भी फॉलो कर लो, अपना कंप्लीट कर दो। और एक इम्पॉर्टेंट चीज जो डीएसए सीखने में ध्यान रखना, कॉन्टेस्ट देना। बिकॉज अब बहुत सारे बच्चे ये करते हैं कि क्वेश्चन करते हैं, वो भी टॉपिक वाइज। जब आप किसी ओए का दोगे या कोई इंटरव्यू दोगे या इनडायरेक्टली किसी कंपटीशन में बैठोगे, वहां पे क्वेश्चन देख के आपको घंटा पता नहीं चलने वाला है कौन से टॉपिक का है। तो बहुत लोग क्या करते हैं कि टॉपिक वाइज क्वेश्चन करते रहते हैं और इनडायरेक्टली उनको पता ही नहीं रहता कि भाई वो टॉपिक का कोई फायदा नहीं है, आपको इनडायरेक्टली पैटर्न पकड़ में आना चाहिए। तो जब आप कॉन्टेस्ट देते हो तब इस चीज की आपको हैबिट बनती है। इसलिए बहुत सारे लोग डीएसए करते हैं लेकिन उनके इंटरव्यू क्लियर नहीं होते। दैट्स द ओनली रीजन, बिकॉज वो पैटर्न वाइज करते, वो टॉपिक वाइज करते रहते हैं और इनडायरेक्टली इंटरव्यू में कोई क्वेश्चन आ जाता है, उन्हें पता ही नहीं कौन सा टॉपिक का है। ये वाली चीज है। अब ये एग्रेसिव का हो, इसमें दूर दूर तक कोई पता लगा दे कि इसमें बाइनरी सर्च लगेगा। एक और क्वेश्चन अभी है, स्मॉलेस्ट केयर पेयर, अभी करूंगा थोड़ी देर बाद, मोस्ट प्रोबेबली। तो वो देखना उसमें दूर दूर तक, हाँ पाथ सब। रुको भाई, तुम्हारा पाथ सब देखूं तो, पाथ सब नीट को, अरे भगवान, क्या है। Given a root of binary tree and an integer target sum, return true if the tree has root to leaf path such that adding up all the values along the path equals to target sum. A leaf is a node with no children. I know. So target sum true. The root to leaf path with the target sum is shown. Hmm. So मेरे को एक, okay, so I have to return if this is possible or not. I have to consider one path. So I have three types of traversal. Either I can follow pre-order, or post-order, or in-order. I can follow any of this. Right. Okay. हाँ हाँ भाई, देखता हूँ। भाई मुझे आता तो नहीं है बट देखते हैं कि क्या किया जा सकता है इस क्वेश्चन में। सॉरी बड़ी, वेट करना पड़ा मुझसे। Target sum. Target sum will be equals to 22. Okay, so what should I do? One thing I observe is that I have to traverse. Okay, and if I if I follow the pre-order traversal, basically I have to return that, will this sum ever occurs or not? Will this sum ever occurs or not?
right? सो इफ आई फॉलो द, भाई अलग अलग पॉसिबिलिटीज ट्राई करते हैं, देखते हैं होगा कि नहीं होगा. So if I follow the pre-order traversal, so I will see that okay, 5 will get. So I will, uh, uh, if I start from root node and goes till goes till the leave node. Okay, leaf node. Uh, target sum. No, will I have to do something else? So at this point, what I want the target sum, right? I want the target sum. And if I stand here, I will, I got 5 here. Okay, so I got 5 here. After getting 5, I will reduce it. Okay, reduce it. So 22 minus 5, which will gives me what? It will give me 17, right? भाई आंसर ना लाओ, मुझे बस देखना है अप्रोच कैसे. ओके, सो मैं भी ऑब्जर्व कर रहा हूँ, ठीक है, कि मेरे को क्या करना है कि मैं एक पॉइंट पे खड़ा हो गया. अगर मैं एक पॉइंट पे खड़ा हो जाता हूँ, ठीक है, अगर मैं इस पॉइंट पे खड़ा हूं तो मेरे पास दो पॉसिबिलिटीज हैं कि मैं इधर भी जा सकता हूँ और इधर भी जा सकता हूँ. ठीक है, तो अगर मैं ये वाला पाथ फॉलो करता हूँ, ठीक है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा. पहले मैंने क्या किया कि मैं रूट नोड पे खड़ा था, तो मेरे को टारगेट सम चाहिए था 22. तो 22 में से मैंने 5 को माइनस कर दिया क्योंकि एक वैल्यू तो मेरे को मिल गई. ठीक है, इनडायरेक्टली मेरे को ऐसे तक पहुंचना है कि जीरो बन जाए. ठीक है, जीरो बनना चाहिए तो पॉसिबल है, और जीरो अगर नहीं बन पा रहा तो पॉसिबल नहीं. ठीक है, तो मैं 4 पे आया. बेसिकली तो मैंने क्या किया कि अभी मेरे पास 17 बचा था. तो मेरे जो दो पाथ हैं, बेसिकली पहले यहाँ पे क्या हो गया था, 17 हो गया था. ठीक है, सब्ट्रैक्ट करने के बाद जब मैं यहाँ पे आया, तो यहाँ पे क्या किया मैंने, 17 - 4. ठीक है, 17 - 4 किया. 17 - 4 का मतलब कितना हो गया, 13. और जब मैं यहाँ पर आया तो ये क्या हो गया, 17 - 8. ठीक है, 17 - 8 कितना हो गया, 9. ठीक है, तो यहां तक का अभी मेरे को 9 मिल गया है. अब मैं अगले पॉइंट पे चला गया. अगले पॉइंट पे गया तो यहाँ पे मेरे को 11 मिल गया. 11 मिला तो मैंने कर दिया 13 - 11. ना आई एम लेफ्ट विद 2. अब मेरे पास जाने की इधर भी पॉसिबिलिटी है और इधर भी पॉसिबिलिटी है. तो अब मैं किधर जाऊं, क्या मैं 7 की तरफ जाऊं. लेकिन अगर मैं 7 की तरफ जाता हूं तो मेरा नेगेटिव हो जाएगा. ठीक है, तो क्या मुझे जाना चाहिए. अब मेरे पास यहाँ पे मुझे डिसाइड करना पड़ेगा कि क्या मैं राइट चाइल्ड लूं, सॉरी लेफ्ट चाइल्ड लूं या राइट चाइल्ड लूं. इन दोनों में से कोई भी चाइल्ड लेने पे अगर मेरा जीरो बन गया तो यहीं से मैं रिटर्न कर दूंगा ट्रू कि हाँ भाई टारगेट सम मिल गया. ठीक है, तो यहाँ पे अब जैसे इधर गया तो इधर क्या होगा कि मेरे पास अभी बचा कितना हुआ है, टारगेट. टारगेट बचा है 2. इधर जाता हूँ तो 7 माइनस करना पड़ेगा जो कि -5 हो जाएगा. -5 हो जाएगा, लेकिन मुझे चाहिए कितना था, टारगेट चाहिए था 22. तो इनडायरेक्टली जीरो बनना चाहिए था. जीरो नहीं बन पा रहा, इसका मतलब कि पॉसिबिलिटी नहीं. ठीक है, तो मे बी मैं ये करूंगा कि इधर वाले को देखूंगा. इधर वाले को लेते ही मेरा टारगेट जो है वो जीरो के बराबर आ गया. तो जैसे ही मेरा टारगेट जीरो के बराबर आ गया, मैं ट्रू रिटर्न कर दूंगा कि हाँ भाई, मेरा टारगेट मिल जाएगा. तो यहाँ पे मैं क्या क्या सोचा. सबसे पहले रूट नोड को लिया और रूट नोड को टारगेट से माइनस कर दिया, ऐसा कुछ. सो फर्स्ट अप्रोच मेरी क्या थी कि मैंने रूट नोड को टारगेट से माइनस कर दिया. और टारगेट से माइनस करने के बाद मैंने ये देखा कि अब जो मेरी वैल्यू बच गई, ठीक है, वो वैल्यू को मैं राइट चाइल्ड से भी माइनस करूंगा और अगर लेफ्ट चाइल्ड एग्जिस्ट करता है तो उससे भी माइनस करूंगा. ठीक है, और मुझे ये दिखता है कि अभी दोनों में ही मेरा क्या कहते हैं, पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है. जैसे कि मैंने क्या किया कि यहाँ पे जब रूट से माइनस किया तो 17 बच गया. तो मैंने राइट चाइल्ड देखा, क्या राइट चाइल्ड खाली है, नहीं राइट चाइल्ड खाली नहीं, सॉरी लेफ्ट चाइल्ड खाली है, नहीं. क्या राइट चाइल्ड खाली है, नहीं. अगर दोनों खाली नहीं है तो मैं क्या करूंगा, टारगेट में से दोनों के जो एलिमेंट है उसको माइनस कर दूंगा. ठीक है, तो पहले मैं 4 को माइनस करूंगा तो 17 - 4 करूंगा और उसके बाद मैं उसके लेफ्ट में चला जाऊंगा. ठीक है, और फिर मैं क्या करूंगा, 8 पे जाऊंगा. 8 पे मैं क्या करूंगा कि जो 17 आया है, 17 में से 8 को माइनस करूँ.
8 को माइनस करने के बाद मेरे पास बच गए 9। और 9 आने के बाद फिर मैं क्या करूंगा, फिर मैं लेफ्ट लेफ्ट और राइट में जाना है मुझे, मतलब बेसिकली मैं वापस कॉलिंग कर दूंगा इनडायरेक्टली उस नोड को पकड़ के उसके लेफ्ट और राइट साइड। ऐसा मेरे को करना पड़ेगा, और ऐसे कर करके मैं नीचे जाता रहूंगा। देखते हैं अगर इस कोड में लिखने जाए तो क्या करना पड़ेगा। आई डोंट नो। सो इज पॉसिबल, इज पॉसिबल। सो इज पॉसिबल में बेसिकली मैं रिटर्न करूंगा आंसर, रिटर्न करूंगा। इज पॉसिबल में मैं क्या भेज दूंगा, रूट। ठीक है, रूट भेज दूंगा। और टारगेट सम भेजूंगा, बिल्कुल नहीं। टारगेट सम में से रूट डेटा को माइनस करके इन लेफ्ट, लेफ्ट इज इक्वल टू क्या बच गया मेरे पास, जो भी मेरे पास टारगेट सम था, टारगेट सम माइनस व्हाट, टारगेट सम माइनस रूट का डेटा है वैल्यू, वैल्यू। ओके, एंड आई विल पास दिस लेफ्ट ऑल्सो। फाइन, now I will create another function bool is possible or not. Okay, so bool is possible or not. Hmm. So tree node, tree node, tree node star a root comma in uh, left. And if I see that okay, if my root will become null pointer, I will return false, because before that I will get the target. And if I see that if my target, sorry, if my left sum somehow become equals to 0, I will return 0. Sorry, I will return true that, okay, this target sum is possible. So, how will I do this? So, if I standing on root element, okay, if I standing on root element, what I will do? I have to go on the left side also, and again I have to go on right side also. So I already perform that target minus root. Or now wait, what I will do, hmm what I will do now, I will pass my left sum. Okay, wait, so whole answer, answer is equals to, basically I have to call this same thing, uh, control V, and if any of this will give me the target sum, I will return this as to be answer. Right? Answer. So possible and a root left and a root right. So wait. Hmm. So what will I do now? I got the target sum, and will I pass my target sum or something else? Hmm. So भाई मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ठीक है, और मैंने क्या किया कि पहले टारगेट सम को लिया, और टारगेट, सॉरी हाँ, टारगेट सम को लिया, टारगेट सम में से मैंने ये करंट वाली वैल्यू को माइनस कर दिया। तो बेसिकली ये वाली मेरी डिस्कवर हो चुकी है। अब डिस्कवर हो चुकी है, तो अब जो मेरी वैल्यू बच गई, ठीक है, तो बेसिकली मैं क्या करूंगा कि अब जो मेरी वैल्यू बच गई, तो वो वैल्यू क्या बची होगी, तो एक काम करो कि इधर किसके लिए सर्च करके आओ, इधर सर्च करके आओ, जो भी मेरा रूट के लेफ्ट का जो भी वैल्यू है, इसके लिए सर्च करूँ। ठीक है, रूट के लेफ्ट की वैल्यू अगर मैं लेफ्ट में से, सॉरी हाँ, लेफ्ट में से माइनस कर देता हूँ, और ऐसा ही सेम इसके लिए भी रूट के राइट में चले जाओ, और राइट के साइड क्या करो कि जो भी मेरी वैल्यू लेफ्ट है उसमें से रूट की राइट की वैल्यू, और वैल्यू नहीं, बेसिकली क्या है, वैल्यू। सो मैं इन दोनों में से चेक करूंगा कि कौन सी पॉसिबिलिटी है। अब इसके बाद मैं जैसे यहाँ पे पहुंच गया,
तो यहाँ पे पहुंचने के बाद क्या करता हूँ, यहाँ पे पहुंचने के बाद ये बेसिकली ये दोनों राइट और लेफ्ट का चेक कर रहा है इनडायरेक्टली। अब मैं सिर्फ राइट के बारे में लिख सकता हूँ कि अगर लेफ्ट सम जीरो आ गए तो ये कर देना, और अदरवाइज रिटर्न कर देना। क्या रिटर्न, रिटर्न क्या करना। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे खड़े होके इस पॉसिबल को अगेन कॉल कर देना। इस पॉसिबल को कॉल कर देना किसके साथ, यहाँ पे मैं वापस कॉल करूंगा तो एक तो रूट। हाँ, कॉल करने के पहले मेरे को ये भी देखना पड़ेगा कि क्या लेफ्ट एग्जिस्ट कर भी रहा है या नहीं कर रहा। हम्म, मेरे को ये चीज देखनी पड़ेगी। लेफ्ट एग्जिस्ट कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है, क्योंकि इसका जैसे राइट एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो मैं राइट और लेफ्ट दोनों साइड को भेजता तो हूँ। जैसे मान लो कि राइट और लेफ्ट ऐसा हो गया अगर कि लेफ्ट एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वहां से कुछ मैं भेजूंगा ही नहीं। कुछ तो यार तीन पांच हो गया इधर। मेरे को ये तो समझ में आ रहा है कि जब मैं इस पॉइंट पर खड़ा हूं तो मुझे लेफ्ट भी जाना है और राइट भी जाना है, और दोनों साइड जाने के लिए टारगेट में से ये वाला एलिमेंट अब माइनस कर दूंगा, जो मेरे रूट की वैल्यू है। और वो बेसिकली खुद जाके देखेगा इधर उधर कि क्या ये पॉसिबल है या नहीं है। बट ये है कि क्या हो अगर लेफ्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो एक काम करता हूँ कि यहाँ पे मैं बना लेता हूँ एक पूल लेफ्ट, और एक बना लेता हूँ पूल राइट। ठीक है, पूल लेफ्ट और पूल राइट बना लिया, या कुछ और नाम से बनाऊं क्योंकि ये नाम है। हाँ, एल बना लेता हूँ, एल और आर। ठीक है, ये जो मेरे को ये दोनों बता देंगे आगे। तो मैं ये बोलता हूँ कि अगर मेरा लेफ्ट, सॉरी, हाँ, मेरा अगर रूट का लेफ्ट एग्जिस्ट करता है तो भाई इधर के साइड चले जाना और एल के अंदर स्टोर कर देना इस पॉसिबल। इस पॉसिबल में क्या करूंगा, रूट के राइट, सॉरी, रूट के लेफ्ट में चले जाऊंगा, और वैल्यू क्या होगी, कितने लीट कोड किए हैं भाई। अरे यार वो लेक्चर लेक्चर कंप्लीट किए, उन्होंने जितने कराए थे वो कर दिए। पूछोगे खुद कितने किए हैं, तो खुद तो अभी करना चालू किया है तो यार 40-50 हो गए। मतलब पढ़ ही रहा हूँ, मैंने भी अभी चालू किया है 1-2 महीने पहले ही, ढंग से मतलब खुद से करना। पहले तो भाई वो लेक्चर देख के वो सब कंप्लीट कर दिया था, तो वो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। हाँ, और ये है कि लेफ्ट सम में से, जो मेरा लेफ्ट सम है उसमें से मैं माइनस कर दूंगा। क्या माइनस कर दूंगा, मैं रूट माइनस कर दूंगा। रूट का जो भी वैल्यू आ रही ये मेरे को बता देगा। और सिमिलरली मैं इसके राइट के लिए भी करूंगा, राइट के लिए भी कर दूंगा। ठीक है, ये सिमिलर चीज राइट के लिए करूंगा, और अगर राइट एग्जिस्ट करता है तो इसके राइट में चले जाना, और लेफ्ट सम में से रूट की वैल्यू माइनस करके चेक करना। तो ये मेरे को राइट बता देगा। और दोनों में से एक साइड भी अगर फॉल्स आ गया, हाँ दोनों में से एक साइड तो फॉल्स आ ही सकता है, तो बेसिकली एक साइड भी ट्रू आ गया मतलब, और आर, आई थिंक सो, पता नहीं ये सही है कि नहीं है। हाँ ये मर गया क्या, टारगेट सम माइनस रूट की वैल्यू। रूट एम्प्टी हुआ तो फॉल्स कर देना भाई। इफ रूट नहीं एग्जिस्ट करता तो रिटर्न फॉल्स। टारगेट सम निकालना पॉसिबल ही नहीं, मतलब है, मतलब नहीं है। एक, बाकी दोनों तो ठीक आए हैं, ये गलत आ गया। गलत क्यों आया होगा, मैं क्या बोल रहा हूँ। अब इसको ट्राई रन करके देखते हैं यार, मेरा एक, यार, यार मेरा एक सेस कर रहा, मैं एक सेस कर रहा हूँ, मुझे कोई तगड़े बैकएंड नॉलेज का बंदन चाहिए, कोई है तुम्हारे पास। यार मेरे नॉलेज, पैसा मिलेगा।
कि यार फ्री में तो कोई भी काम नहीं करता है, मतलब मैं किसी को बोलूंगा भी तो वही है, या फिर प्रोजेक्ट बनाना है उसके लिए चाहिए, ऐसा कुछ है। ये इसकी गलती देखते हैं, इतना बड़ा कोड लिख तो दिया 4 अंक का। हम्म। तो लेट्स डिलीट दिस। यस। हाँ है भाई। मेरे ट्विटर पे कांटेक्ट कर लो, तो वहां पे कर लूंगा। है मेरे पास बंदे तो हैं। हम्म। सो सबसे पहले ये कि मेरा 5 सम और मेरा टारगेट वो लिया हुआ था, वो 22 किया हुआ है। ठीक है, और 22 लेने के बाद मैंने क्या किया कि एक लेफ्ट निकाल, तो जो मेरा लेफ्ट आया है, वो आया है मेरा टारगेट सम माइनस रूट वैल्यू। सो टारगेट सम मेरा 22 था, और 22 में से मैंने 17 को माइनस कर दिया, ठीक है। अब मैंने, ये दोनों साइड का क्यों मांग रहा हूँ लेकिन, दोनों साइड से आना जरूरी थोड़ी है, एक साइड से ही आएगा बस। ठीक है, कर रहा हूँ। अब ये गलत हो गया। खैर ठीक है, 1 2 3 टारगेट सम 5। राइट। वैसे तो मैं पैदा बिहार में हुआ हूँ, लेकिन रहा नहीं हूँ वहाँ पे कभी। मतलब बचपन से ही आगरा में रहा हूँ, और अभी खैर मैं ग्रेटर नोएडा में। तो ओके, सो आई हैव टारगेट सम इक्वल्स टू 5, एंड लेट मी सी। 5 वाला एग्जांपल यहाँ पे दे रखा है। व्हाट इज दिस, या टारगेट सम इक्वल्स टू 5। आई गॉट फॉल्स, राइट। आगरा में कहाँ? मैं आगरा में पहले रहता था, छोड़ दिया मैंने। 2 साल पहले रहता था। 3 साल, मतलब 4th ईयर में आ गया ना, 3 साल पहले, 3 4 साल। हाँ। ओके। सो टारगेट मेरा, टारगेट सम दिया हुआ है 5, ठीक है। 5 दिया हुआ है, और यहाँ पे मैंने पहले क्या किया हुआ, मैंने देखा कि ठीक है, लेफ्ट सम कितना बच गया। लेफ्ट सम बच गया, रूट वाला उड़ा दूंगा। तो आई एम लेफ्ट विद हाउ मच, टारगेट, टारगेट सम विच इज 5 माइनस रूट विच इज रूट वैल्यू विच इज इक्वल टू, नाउ आई लेफ्ट विद 4। सो 4 मिलने के बाद अब मैं क्या करूंगा, इस पॉसिबल नाम का जो फंक्शन है, उसके अंदर रूट का लेफ्ट, मतलब रूट का लेफ्ट मतलब ये वाला नोट डाल दूंगा, और रूट के लेफ्ट के साथ बेसिकली यहाँ पे मेरे को वैल्यू भी पास करनी, वैल्यू पास करनी थी। तो क्या वैल्यू पास करनी थी? वैल्यू पास करनी चाहिए थी कि अब मेरे पास इस नोड को पकड़ के कितना टारगेट बच गया। सो विल आई हैव टू पास लेफ्ट रूट, लेफ्ट माइनस रूट लेफ्ट, ना ना, आई हैव टू पास, I have to pass this value left only, right? I think so. Wait. You'll have to pass left only. I've done something wrong. क्या करूं मैं?
मेरे को जहां तक ये समझ में आया है, what I observe here is that I will take a root node and I will take the targets, right? And I will pass it inside the function. After passing it inside the function, what I will do, wait, I have to write this function again. Basically, it will return me target, right? Target. Inside that, I will pass whatever the root I have, and then whatever the target sum I have, right? And then I will pull or target. Inside target, what I will do, I will call that tree node star root, comma what? Root, comma int sum, right? Int sum. Now, if my root is equals to null ptr, I will return false, because when I reach up till leaf node, it means that I never found my target sum. So I will return false. Now here also I write the condition that the root, if there is root which is null, so I will return false because there is no way I can find the target sum. So return false here. Now after that, what I will do is, if I will check if I found my sum is equals to 0, I will return true. Right, I will return true. And after that, I will call my return is possible. Before calling is possible, I will write the bool is not is possible. I will write the bool L and bool R, means I have to call the functions. So no, I have to yeah, I have to call the right function and left function with right node and left node. So what I will do, I will check that okay, will root right exist? Will root right exist or root left exist? If root left exists, L is equals to, I will call this same function target with what? With what? I will call it with something, right? I will call it with something, a root left, and with target sum, that how much target sum I have left. So what I will do, I will sum minus root, the root of value, right? I will call it with this. And then again I will call it with the root right and right. So some root value, and okay. So after that I will write it like root right, wait, root right. And then I will return L or R. Any of this. I think so. I don't know if this is correct or not. What? Uh, some root. Oh, what is this? Some root. This. Oh, again got the wrong answer. I don't know why, but yeah, my bad. So if I reach the null, it means that I have to return false because I will never get the. भाई समझ गया, वो ट्राई करता हूँ. आप कहाँ दिक्कत आ रही है, आप करना है कर सकते हो. नहीं देखता हूँ. ज्यादा दिक्कत नहीं आ रही होगी. कॉन्सेप्ट तो इसका यही है इनडायरेक्टली कि मैं उल्टा सोचता हूँ इसमें. उल्टा ही सोचना है, बट मैं कुछ कुछ थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा हूँ, ज्यादा नहीं. मेरे को ये पता है कि जैसे ही मैं नल पे पहुंचूंगा तो इसका मतलब मुझे सम मिला ही नहीं, मैं रिटर्न कर दूंगा.
अगर मेरे को सम 0 मिल गया, इसका मतलब ये है कि मैं ट्रू रिटर्न कर दूंगा, टारगेट सम मिल गया किसी पाथ में जाके। अदरवाइज क्या करता हूँ, मैं एक वैल्यू को पकड़ता हूँ, उस वैल्यू को पकड़ने के बाद आ, मैंने कभी मैंने क्या किया, अब मैं यहाँ पॉइंट पे सेकेंड, जब मैं यहाँ पे खड़ा था, ठीक है, तो यहाँ से मैं लेफ्ट के लिए चेक करने जा रहा हूँ और राइट के लिए चेक करने जा रहा हूँ। तो जब इसके लिए चेक करने जा रहा हूँ तो इनके लिए ओरिजिनल वैल्यू क्या होगी, टारगेट में से माइनस हो गया ये 5। ये सर्च करूँ कि इतना बचा हुआ है इस वाले रीजन में कि नहीं, मतलब कि टारगेट -5 ही आ, ठीक है। Good. Create a to leave path such that adding up all the values along. Okay, after that also I have to check if I found the sum, then also I have to check if this is leap or not, right? If this is not leap, I will return false, otherwise true, right? Maybe. I will check if my whatever the if this is leap, then root right is equals to null ptr and root uh, root left is equals to null ptr. So I will return true and I think so, else return false. It's something wrong. Hmm, 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 hmm. हाँ सर, लेफ्ट एग्जिस्ट करता है तो रूट लेफ्ट में चले जाओ, ये सम फाइंड कर दो, नल पॉइंटर आते फॉल्स रिटर्न कर दो कि मिल ही नहीं पाया, तो यानी उसके पहले मिल गया। सी वी कैन गेट द टारगेट सम इन मिडल नोड आल्सो, मींस वी गेट टारगेट सम विदाउट गोइंग टू लिव थिंग। या आई थिंक about it, like if I get some, it is given in the question. I understand that it is given in the question that return true if the tree has root to leaf path. Means I have to reach till leaf. If I found the target and if it is not leaf, I will return false. Maybe. And if it is leaf, I will return true. So if I got the sum is equals to 0, then I will check if this is leaf or not. And if this is leaf, I will return true. Otherwise, I will return false. And otherwise, what I will do, that when I stand here, I know that I have to go on the left side and also on the right side, but after subtracting this node value. So when I stand here, I know that what is my target sum, and when I going towards left, so I will subtract my target. I will subtract this node value for my target sum. So sum minus the root value, and after that I will going towards left, and also I will going towards right. Right. I will going towards right also. If the right node exists. And after that, if any of this will return me, yeah, this is possible that I can reach up till end and I will find that, okay, this is sleep or not. What's going wrong?
एक तो खेल करना अच्छा लगता इजी है बट मेरे को ट्री का कुछ भी बिल्कुल आइडिया नहीं है वो बस कॉलेज वाला जो पढ़ा है उसी के बेसिस पे देख रहा हूँ लेक्चर कंप्लीट किए थे बट उतना कुछ समझा नहीं था उसमें क्या है पढ़ूंगा दोबारा तो मे भी हो जाएगा बट ऐसे सोच रहा हूँ कि क्या कर सकता हूँ हाँ सो इस कोड में क्या कि पहले तो मैं यहाँ पे खड़ा हूँ आई एम स्टैंडिंग हियर एंड आई विल गेट 5 राइट सो आफ्टर दैट आई विल चेक दैट विल रूट पॉइंटर इज इक्वल टू नल कितने प्रॉब्लम्स हुए यार मैं बाइनरी सर्च पे कर रहा था लेकिन ये भाई ने थोड़ा ट्री का पूछा तो मैं ट्री का देखने लगा मैं इस पे हटा कर रहा हूँ देख रहा हूँ कैसे होगा बट कैसे ही दिमाग चलाऊंगा मैं ओके आई विल सी दैट विल दिस रूट पॉइंटर इज इक्वल टू नल पॉइंटर नो so what I will do I will check that if I got the sum is equals to 0 no because target sum is currently what 22 don't worry bhai myself now uh, uh, I will try myself. Anyway, I got the idea to post of this kind. Yeah. I'm also trying that. Let's see if I will do this or not. If not, then I will try it tomorrow again. But I will not see the solution that how actually this has been implemented. Any tips for beginner? Beginner का ये है कि भाई पहले तो खत्म कर डीएसए के टॉपिक्स जान जाओ वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है एंड देन उसके बाद कुछ हाँ सारे मतलब ये कई ऐसे होते हैं कि खाली एरे पढ़ा और उसी के 400 क्वेश्चन लगा दिए दूसरे टॉपिक का हवा ही नहीं वो एक दिक्कत है सो आई गॉट ओके आई हैव टारगेट is equals to 22 and now I will see will the sum is equals to 0 no because it will be initially 22 so if this is not equals to 0 what I will do I will check will there left exist yeah left exist so I will again call this function with the root left so root left and what is the new target sum? So new target sum will be whatever the target sum is, which is 22, minus what is my current element. So 22 minus 5, which will be 17, right? इस ड्राइवर की शीट फॉलो करूँ हाँ भाई कर सकते हो बिल्कुल so here it will be 22 and now here it will what here it will if I see here it will 22 minus 5 which is 17 here it will be 17 right okay, so again, I will jump to another function and I will see will root is equals to null pointer? No. Will sum is equals to 0? No. So what I will see will left exist? Yeah, the left exists. So if the left exists, what I will do? If the left exists, wait, wait. Okay, if the left exists, what I will do? I will call the left function and now this will carry what? Whatever the current sum, which is 17 minus 4. 17 minus 4 is 30. So when I stand there, I got 30. Now I will check. Again, will sum is equals to 0? No. Will sum is equals to 0? No. And will root is, भाई याद हूँ मैं अ, शायद परसों आए थे या शायद कल आए थे कभी तो आए थे इतना याद है बट इतना याद नहीं है कि क्या पूछा था तो इतना तो मुझे याद so I've seen here okay I have left with the target sum is equals to 13 and now I will check okay will my sum is become equals to 0 so no my root is also not null and my sum is also not equals to 0
So wait. So when I stand here, I have to pass 17, right? So when I'm here, what I'm searching for? I'm searching for, uh, okay, I got 13, right? So 13 is not equal to 0 or null pointer. And also I will see, will a left exist? Yeah, left exists. So when the left exists, so what I will do? I will jump here. And what I've seen here that, okay, 13 minus 11, I will left with 2 here. I will left with 2 here. Again, I will see, will this be null pointer? No. ये गलत हो गया। बेसिकली मेरे को यहीं पे पता होना चाहिए कि भाई मुझे अब कितने सम की रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे ये 5 नहीं आएगा बेसिकली। यहाँ पे ये 22 नहीं आएगा, यहाँ पे 17 आएगा। यहाँ पे 17 आएगा कि यहाँ के जब लेफ्ट में जा रहा हूँ या राइट में जा रहा हूँ, तो अब मुझे यहाँ पे 17 - 5 भेज देना चाहिए। तुम्हारे 6 घंटे वाली स्ट्रीम के साथ मैं भी अपना डीएसए सॉल्व कर रहा था। एनीवे भाई, एरे के आज में पढ़ा नहीं जा रहा। डीएसए में कोई टिप दे दो, फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हो। ओ ओके। सो यार, स्टूडेंट हूँ इन डीटी। हाँ तो गुड भाई, डीटी हुए तो फिर तो बढ़िया ही है। अभी इस साल तो बढ़िया कंपनी है थी। तो इनडायरेक्टली ये है कि डीएसए की टिप यही है कि एरे के आगे तुम्हें करना है। तो देखो मैंने क्या किया है कि एक, अगर तुम मेरे उस पे जाओगे यूट्यूब पे, ठीक है, तो मेरे यूट्यूब पे अभी मैंने एक पोस्ट डाली थी। उस पोस्ट में मैंने सारे नोट्स दे रखे हैं, जो भी डीएसए के क्वेश्चंस के नोट्स। तुम उससे पढ़ के पूरा डीएसए समझ सकते हो। अभी बस उसमें डीपी टॉपिक नहीं है और एक 2D एरे टॉपिक नहीं। वो मैं अभी क्योंकि मैंने वो खुद नहीं पढ़ा है, तो मैं वो बेसिकली ऐड कर दूंगा। एक महीने के आसपास और लगेगा। तुम उस उन सारे टॉपिक्स को पढ़ के समझ के कंप्लीट कर सकते हो। हर टॉपिक का है, मतलब उसमें क्या क्या है। तुम्हें एरे है, बाइनरी सर्च है। ठीक है, बाइनरी सर्च की एक लिमिट है, उसके आगे मत करना। वो मैंने फर्जीवाड़े के कुछ क्वेश्चन डाल दिए थे, आड़े तिरछे से। ठीक है, जैसे ये बाइनरी सर्च की ऐसी करके मैंने एक शीट वगैरह बना रखी है कि इनडायरेक्टली तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। ठीक है, उससे रिलेटेड जो भी चीजें हैं बाइनरी सर्च से रिलेटेड। और फिर मैंने बहुत कुछ, हाँ, तो अगर तुम बाइनरी सर्च की अगर रीड करने चले गए तो 68 पेजेस तक कर सकते हो, उसके आगे मत करना। डच नेशनल फ्लैग एल्गोरिथम, क्योंकि इसके आगे, हाँ, डच नेशनल फ्लैग एल्गोरिथम पढ़ा है भाई। तो ये सब मैंने थोड़ा ओए का डाल दिया था यहाँ पे कि ओए में थोड़े आड़े तिरछे से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कुछ भी पूछ देते हैं, वही है। तो वो सब बाद में कर सकते हो, अभी नहीं। अगर तुम्हें पढ़ना हो डीएसए, अगर तुम लेक्चर्स पे प्रेफर नहीं रहना चाह रहे या उस पे स्टिक नहीं रहना चाह रहे, तो इनडायरेक्टली तुम इस नोट से भी पढ़ सकते हो। मैंने ऐसा कुछ किया है। मैं ना एक ही क्वेश्चन को इन डिटेल किए जाता हूँ, इससे ज्यादा टाइम स्पेंड होता है एक सिंगल क्वेश्चन पर। सो ये जनरल एक क्वेश्चन में कितना टाइम देना चाहिए तुम्हारे अकॉर्डिंग, देख देख लूंगा, ठीक, हाँ। तो एक क्वेश्चन में तुम 2 घंटे के आसपास दे सकते हो। ठीक है, 2 घंटे के आसपास, क्योंकि इनडायरेक्टली ये है कि बहुत सारे क्वेश्चन करने करने का कोई फायदा नहीं है। इनडायरेक्टली ये है कि आपको पैटर्न पकड़ में आना चाहिए। 200 300 क्वेश्चंस के अगर आपने ड्राई रन किए होंगे एग्जैक्ट, ठीक है, पूरा ड्राई रन की, हाँ भाई ये वाला पैटर्न कैसे समझ में आ रहा है, कि इस हिमालय में ये पैटर्न लगा दूंगा, तो 200 300 क्वेश्चन से हो जाता है। और ऐसा जब फर्स्ट ईयर में हो तो भाई आप टाइम दो, क्योंकि ये डेवलपमेंट नहीं है या मशीन लर्निंग जैसी चीज नहीं है कि आपको एक ही कॉन्सेप्ट पता है तो उस बेसिस पे हो जाएगा। इसमें आपको बहुत सारे अलग अलग, बहुत सारे तो ऐसे कंस्ट्रक्टिव एल्गोरिदम वाले क्वेश्चन होते हैं जिसमें कोई लॉजिक नहीं लग रहा होता है। ठीक है, इनडायरेक्टली आपको ही एल्गोरिदम डिजाइन करना पड़ता है उस सॉल्यूशन को सॉल्व, मतलब सॉल्यूशन निकालने के लिए। तो जितना टाइम इस पे दे सकते हो दो, कोई दिक्कत नहीं। एक क्वेश्चन पे इन डेप्थ जितना जानोगे और ज्यादा बढ़िया रहेगा। ये है। और अगर तुम्हें बेसिकली ये क्या है कि जब आप पढ़ रहे होते हो इसको कोई नहीं देखने वाला। ठीक है, देखेगा क्या, आपकी कॉन्टेस्ट में रैंक, ये सब। तो जब कॉन्टेस्ट देते हो उसको एकदम भाई
एक फेयर मैनर में। मतलब बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि कॉन्टेस्ट देते हैं और क्वेश्चन नहीं आ रहा तो भाई जीपीटी से कॉपी मार दिया, या नहीं तो किसी से पूछ के कर दिया। तो वो एक फेयर नहीं होता। इनडायरेक्टली वो दिखाना थोड़ी है किसी को भाई, आप ही को इम्प्रूव होना है। तो अगर आप चीटिंग कर भी लोगे तो उससे इनडायरेक्टली कुछ फायदा होने वाला है नहीं, क्योंकि कंपनी में तो बता नहीं पाओगे। तो ये है कि अगर तुम वैसे सीखो, जितना टाइम लगा रहे हो लगा दो, और कॉन्टेस्ट में चेक करो कि क्या तुम्हारे नॉलेज में इजाफा हुआ भी है कि नहीं। वही एक तरीका है इम्प्रूवमेंट का। जैसे हम्म सो यहाँ पे जो प्रॉब्लम मेरे को समझ में आई है, यहाँ पे जब मैं खड़ा हूँ, तो यहाँ पे मेरे को खड़े होके ये पता करना है कि इधर 17 आ गया और इधर 13 आ गया, और इधर 13 के बाद इधर मेरे पास कितना बच गया है। नहीं नहीं, ये तो पूरा ही गलत हो जाएगा, ये तो 22 है। यहाँ 17 चाहिए, यहाँ मेरे को कितना चाहिए, यहाँ 13 चाहिए। यहाँ पे आने के बाद आई एम लेफ्ट विद 2। मैं लीव पे पहुंच गया और अभी मेरा सम बच गया। ठीक है। और यहाँ पे जब मैं पहुंचता हूँ, तो क्या मैं करंट वाले एलिमेंट को माइनस करके भी देखूं? कि क्या मैं करंट वाले एलिमेंट को माइनस करने के बाद, हम्म, एक सेकेंड, जब मैं यहाँ पहुंच गया तो मैं दो दो के साथ बच गया हूँ। और वही जब मैं यहाँ भी पहुंचूंगा तो मैं दो के साथ बच गया हूँ। ठीक है। तो अब मैं जिसके साथ, अब मैंने ये देखा कि क्या मैं लीफ पे पहुंच गया, और लीफ पे पहुंचने के साथ साथ जो मेरी वैल्यू आ रही है, क्या वो वैल्यू एग्जैक्ट इसी रूट के बराबर ही है। अगर ये इसी के बराबर है तो ट्रू, और नहीं तो फॉल्स। एक सेकेंड, क्या मेरे को ये ऐड करना चाहिए? मैं लीफ पे तो पहुंच गया, और लीफ पे पहुंचने के बाद अब मैं ये देखूं कि भाई इफ अगर ऐसा होता है कि मेरा जो रूट का, एक सेकेंड, क्या वो रूट था? नहीं, वो सम था। क्या वो जो सम है, क्या वो इक्वल्स टू मेरा जो रूट आया है, उसी के डेट उसी के वैल्यू के बराबर है? अगर है तो ट्रू, और एल्स फॉल्स, एल्स रिटर्न फॉल्स। आई थिंक। अरे यार। ओके भाई, इनिशियली 2 आवर तक दिया करूँ न्यू क्वेश्चंस पर, मैं सोचता हूँ हम लेट हो रहे हैं एंड ऑल, इसीलिए मन नहीं करता इतना। अरे नहीं नहीं भाई, कोई लेट वेट नहीं हो रहे। अगर तुम डीएसए में देखने जाओगे तो डेटा स्ट्रक्चर्स में कितना टॉपिक है, मतलब डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिदम अलग अलग। तो डेटा स्ट्रक्चर्स में क्या है? एरे, स्ट्रिंग्स, हैश मैप, और स्टैक क्यू, लिंक लिस्ट, और क्या बोलते हैं, ग्राफ और डीपी। नहीं, ग्राफ और क्या बोलते हैं, ग्राफ के अलावा हीप, बस। और एल्गोरिदम्स में क्या है? बाइनरी सर्च, ग्रीडी, डीपी, और क्या है? और स्ट्रिंग एल्गोरिदम से केएमपी वगैरह। दैट्स इट। भाई जितना टाइम लग सके उतना लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हारे कॉलेज में तो भाई अभी वो आई थी, क्या नाम है, टावर रिसर्च, एक एक लड़के का लगा था। ट्री ग्राफ्स, हीप्स, हाँ। ट्री भी, हाँ, ट्री भूल गया। मैंने भी स्टार्टिंग से ही पढ़ना चालू किया है, क्योंकि इनडायरेक्टली मैंने जब लेक्चर्स खत्म करके क्वेश्चन लगाने गया था ना, मैंने ये पागलपंती करी थी। जो मैंने गलती करी है मैं वो बताता हूँ, कि वो गलती कोई और ना करे। ठीक है। तो मेरी गलती ये थी कि मैंने लेक्चर्स देखे, और एक नॉर्मल जैसे, क्योंकि मैंने डेवलपमेंट क्या किया था कि एक दिन में मैं 12-15 घंटे पढ़ता था डेवलपमेंट। तो 12-15 घंटे करता था, तो मैं क्या करता था, एक ही दिन में 4 लेक्चर निपटा देता था उसके। तो मेरे को ओवरऑल डेवलपमेंट खत्म करने में मात्र 25-26 दिन लगे। 25-26 दिन में मैंने जावास्क्रिप्ट, टाइपस्क्रिप्ट, रिएक्ट, नेक्स्ट जेएस, पोस्टग्रेस, प्रिज्मा, डॉकर, क्यूबरनेट, सिस्टम डिजाइन वगैरह और जितनी भी चीजें थी सब निपटा डाली। ठीक है। और लिटरली मैं सीख गया, क्योंकि मैं 15-15 घंटे पढ़ता था। तो वो तो मैं 2 साल तक करते रहा, और मैंने कई कंपनीज में अप्लाई भी किया, कई कुछ किया, कुछ कुछ किया इनडायरेक्टली।
ठीक है, मोस्टली मैं रिजेक्ट कहाँ पे हुआ, एक यूएस बेस्ड स्टार्टअप में रिजेक्ट हुआ था बिकॉज ऑफ डीएसए, क्योंकि उन्होंने लास्ट राउंड में केएमपी एल्गोरिदम का क्वेश्चन पूछा था, मुझे आइडिया ही नहीं था कुछ। ठीक है। और बाकी ये था कि और इंटरव्यूज दिए हैं, लेकिन बिकॉज ऑफ जितना वो पैसा देते हैं उतना मैं महीने में खा जाता हूँ। ठीक है, तो इसीलिए उन कंपनीज में मुझे काम करने का कुछ उतना सेंस लगा नहीं। और ये है कि मेरे पास रेफरल्स का ऑप्शन है, तो इनडायरेक्टली जब मेरे को जॉब चाहिए होगी तो मैं ले लूँ। ठीक है, तो ये वाली चीज है, तो इतना मैं ज्यादा उस पर ध्यान देता नहीं। और यही गलती मैंने क्या करी, सेम गलती मैंने डीएसए में करी, कि मैंने डीएसए का भी देखा कि एक काम करता हूँ, साला 160 लेक्चर है, तो एक दिन में अगर मैं 4 लेक्चर निपटा देता हूँ तो इनडायरेक्टली एक महीने में मेरा डीएसए खत्म हो जाएगा, 2 महीने में। और लिटरली वो 2 महीने में खत्म हो गया, लेकिन बस वो डीएसए के लेक्चर ही खत्म हुए, समझ में कुछ नहीं आया। और फिर जब मैं 2 महीने बाद उसके क्वेश्चंस लगाने बैठा, 2 महीने कौन से, ये जो अब मैं क्वेश्चंस लगाने बैठा अभी से 20-25 दिन पहले, तो मेरे को समझ में आया कि मैंने बस लेक्चर्स खत्म किए, किया तो कुछ भी नहीं। ठीक है, क्योंकि समझ में तो आ नहीं रहा मेरे को कि करना क्या है इसमें, इसमें पैटर्न क्या है, ये क्या है, वो क्या है, तो मैंने वापस पढ़ना चालू किया। हाँ, कोडर आर्मी का दिखता था। तो मैंने लेक्चर तो बहुत तेजी उन्होंने पढ़ाया बहुत तगड़ा था। उसमें गलती मेरी ये थी कि मैंने लेक्चर्स खत्म कर दी। लाइक एक होता है कि आप एक लेक्चर देखो फिर उसको पूरा डीप अंडरस्टैंड करो कि क्या क्या इसमें कैसे कैसे लगा है। और मैंने सोचा कि अब निपटा देते हैं, बाद में देखेंगे। अब वो निपटा दिया और खेल हो गया। तो इनडायरेक्टली मैं वही चीज वापस, मैं दूसरे को नहीं बोलूंगा कि ऐसा कोई कर दे, क्योंकि मैंने खुद गलती करी है इस वजह से। ठीक है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, स्टार्टिंग से वापस पढ़ रहा हूँ सारी चीजें धीरे धीरे, कि भाई मुझे समझ में आए। ठीक है, क्योंकि इनडायरेक्टली अगर मैं किसी को समझा नहीं पा रहा तो इनडायरेक्टली वो चीजें मेरे को आती नहीं है। क्योंकि ये डीएसए, अब इतना प्रॉब्लम सॉल्विंग आप कर लोगे। एक चीज और ध्यान देनी रहती है डीएसए में। अब एक बुक है, क्या नाम है उस बुक का, क्रैकिंग द कोडिंग इंटरव्यू करके, उसमें लिखा हुआ है कि जब आप इंटरव्यू देने जाते हो, ठीक है, तो एक इंटरव्यूअर के पास एक सेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, उसी में से वो पूछता है। तो वो रिजेक्ट कौन से बेसिस पे करता है, क्या आप नहीं समझा पाते तो रिजेक्ट करता है? नहीं, वो एक क्वेश्चन लेके आएगा, वो क्वेश्चन आपसे पूछेगा। पूछने के बाद वो ये देखेगा कि आपको हिंट की कितनी जरूरत पड़ी, ठीक है, और आपको कितना बेटर, आप कितना बेटर इसको एक्सप्लेन कर पाए, वगैरह वगैरह, ये सब चीजें वो देखता है। और ये चीजें देख के पॉइंट्स बनाता है, और वो पॉइंट्स लेता है, और फिर जितने प्रीवियस कैंडिडेट हैं जिनसे वो सेम क्वेश्चन पूछ चुका है उनके पॉइंट से कंपैरिजन करता है, और उससे कंपैरिजन करने के बाद आपको रिजेक्ट या एक्सेप्ट कर लेता है। ये होता है एक्चुअल। तो इनडायरेक्टली यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्विंग ही खाली मैटर नहीं करती। अ, हम्म, नहीं, नाइट स्टडी से नहीं, हेल्थ प्रॉब्लम तो नहीं, अरे ऐसा कुछ नहीं। और मैं डेली नाइट स्टडी नहीं करता हूँ, मतलब ये है कि आज कर रहा हूँ, कभी कभार करता हूँ, मैं डेली नहीं करता, मोस्टली मैं 6 बजे उठ जाता हूँ। बड़ा आज मन कर रहा तो कर रहा हूँ। ब्रो विच यूनिवर्सिटी? एकेटी यूनिवर्सिटी। तो इनडायरेक्टली ये होता है कि जब इंटरव्यू ऐसा कुछ प्रोसेस होगा, तो आपकी चेक करी जाएगी कम्युनिकेशन स्किल्स भी, क्योंकि हर कॉम्पिटिटिव कोडर एक कंपनी में काम नहीं कर सकता। बिकॉज बहुत सारे कॉम्पिटिटिव कोडर्स को समझाने नहीं आता कि कैसे आया अपनी, बस आ गया। तो ये चीज है कि आपको इस चीज पे भी ध्यान देना पड़ेगा कि मैं जब डीएसए सीख रहा हूँ तो क्या मैं वो किसी को समझा पा रहा हूँ ये क्वेश्चन, की नहीं समझा पा रहा। नहीं समझा पा रहा तो आप कितनी भी कोडिंग कर लो या कितने भी डीएसए कर लो, इनडायरेक्टली आपका सिलेक्शन बहुत डिफिकल्ट होगा। ये चीज है, क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल्स लास्ट में मैटर जरूर करती है। हो जाएगी इम्प्रूवमेंट, ऐसे ही है, यही तरीका। और ये मेरा भिखमंगा क्वेश्चन फिर से इसकी पिटाई हो गई। विच ईयर? आई एम इन फोर्थ ईयर बडी। फोर्थ ईयर। अरे भगवान, बड़ी प्रॉब्लम है भाई। साला ये फिर गलत हो गया। इस एक्सपेक्टेड इट ट्रू, दे रहा है फॉल्स। फॉल्स क्यों दे रहा होगा ये?
कहीं से फॉल्स रिटर्न हो रहा है तभी फॉल्स दे रहा है। इसका रूट ही नल पॉइंटर हो गया, वहीं पे फॉल्स दे रहा है। तो रूट ही नल पॉइंटर। जब मैं राइट साइड देख रहा हूँ एग्जिस्ट, भाई मैं बहुत दिनों से परेशान, कोई बात क्या? भाई मैं बहुत दिनों से परेशान, कोई बोलता है ऐसे करो, कोई बोलता है वैसे करो। आप एक्चुअली स्टूडेंट हो, अगर आप बिगिनियर्स को एडवाइस करना चाहते हो तो मुझे बहुत हेल्प हो। हाँ यार, दिन में नहीं आई। नहीं यार, वो थोड़ा काम में वगैरह में बिजी हो गया था तो इस वजह से आज रात में कर रहा हूँ। कर तो रहा ही हूँ। ठीक है, तो बिगिनियर्स के लिए ये एडवाइस है भाई कि बहुत कुछ बोलते हैं कि ये कर लो वो कर लो, इनडायरेक्टली तुम एक चीज समझो। देखो, अगर आपको डेवलपमेंट, अगर कोई बोलता है डेवलपमेंट कर, तो आप कर सकते हो डेवलपमेंट, लेकिन डेवलपमेंट कितना करो? तो बेसिकली आप फ्रंट एंड निपटाओ। ठीक है। और इनडायरेक्टली एज अ फ्रेशर बहुत डिफिकल्ट है फ्रंट एंड की जॉब लेना। और भाई मर्न या जावा, जावा, जावा भाई। कंपटीशन एक तो कम है बिकॉज ऑफ जावा डिफिकल्ट है, और दूसरी चीज ये मर्न इजी है क्योंकि साला कोई भी डेवलपमेंट सीखने आता है सबसे पहले यही करता है। तो ओके, सो बेसिकली ये है कि अगर आप डेवलपमेंट कर रहे हो तो किस लेवल पे करोगे डेवलपमेंट, कि भाई पूरा ही कर गए, लाइक फ्रंट एंड बैक एंड। अब बैक एंड में भी बहुत सारी टेक्नोलॉजी है, आपको देखना पड़ेगा किसमें कौन सी हार्ड है, क्योंकि जो हार्ड होगी उसमें कंपटीशन कम रहेगा। और हार्ड के साथ साथ ये भी देखना पड़ेगा कि डिमांड किसकी है। लाइक जावा की डिमांड है, गोलैंग की डिमांड है, जेंगो की डिमांड। तो और ये तीनों ही हार्ड, तो इन तीनों में से कोई भी एक पकड़ लो और उसको सीखो। उसके साथ साथ डेवलपमेंट में आपको सिस्टम डिजाइन भी जानना पड़ेगा। तो सिस्टम डिजाइन भी जान, सिस्टम डिजाइन जानने के साथ साथ आपको डेवऑप्स सेक्शन भी जानना पड़ेगा। तो अगर आप इतनी डेवलपमेंट जानते हो तो आपके लिए डेवलपमेंट रोल सिक्योर। ठीक है। अरे एक ये है यूट्यूब चैनल, क्या नाम है उसका, जावा, एक नवीन रेड्डी करके एक चैनल होगा, टोलिस्को करके, उसने जावा पढ़ाए थे, 63 आवर्स का उसका लेक्चर, उसमें पूरे जावा पढ़ा दिया। पढ़ा। और ये बताओ डीएसए इंटरव्यू में कितना पूछते हैं डीएसए में? बहुत बेकार हूँ पर डेवलपमेंट में अच्छा हूँ। हाँ हाँ, बताता हूँ बताता हूँ। ठीक है, तो अगर आप डेवलपमेंट कर रहे हो तो ये चीज करोगे। अगर आप डेवलपमेंट नहीं कर रहे, डीएसए कर रहे, तो एक चीज ध्यान रखो कि जो डीएसए का इंटरव्यू है, इंटरव्यू में तो आप बाद में पहुंचोगे, उसके पहले आएगा ओए राउंड। ठीक है, तो अब उसमें भी कंपनीज है कि आप कौन सी कंपनी को टारगेट कर रहे हो। अगर आप एक सर्विस बेस्ड कंपनी टारगेट करते हो, एसेंचर, विप्रो, टीसीएस वगैरह, ये आपसे उतने हाई लेवल के क्वेश्चंस नहीं पूछेंगी कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग के। थोड़ा सा नॉर्मल क्वेश्चन रहेगा, मतलब लीड कोड हार्ड मान सकते हो उतना। लीड कोड हार्ड भी पूछ देती है ओए राउंड। ठीक है। एक ओए हमेशा एक हार्ड होता है एज कंपेयर टू, अगर आप इंटरव्यू देखोगे तो आप ओए क्रैक करके ही इंटरव्यू में जा सकते हैं। तो ओए, अगर कोई एमएनसी देखते हो, फिनटेक कंपनी जैसे जेपी मॉर्गन, मॉर्गन स्टैनली, गोल्डमैन सैक वगैरह, या अमेजोन, फ्लिपकार्ट, या वगैरह वगैरह, तो इन सब के ओए ज्यादा टिपिकल है। और वो क्रैक करने के लिए आपको इनडायरेक्टली कॉम्पिटिटिव कोडिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि वहीं से क्वेश्चन आते हैं मोस्टली। 80% नॉन स्टैंडर्ड डीएसए क्वेश्चन होता है। नॉन स्टैंडर्ड डीएसए वो होता है जो आपको ना कहीं लीड कोड पे मिलेगा ना कहीं और मिलेगा। इनडायरेक्टली आपको कोई भी कॉम्पिटिटिव प्लेटफॉर्म में, जैसे कोड फोर्सेस या कोड शेफ हो गया, उनके कॉन्टेस्ट वगैरह में मिल जाएगा, डिवीजन 1 2 3, जिसमें कुछ पता नहीं चलता, क्वेश्चन कुछ और बोल रहा है, आंसर कुछ और आ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको ओए में मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये है। और ये जब क्रैक कर लोगे तब जाओगे वो इंटरव्यू राउंड। तो तब इंटरव्यू राउंड इजी लगेगा, क्योंकि उसमें बेसिकली ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो आप ये नॉर्मल डीएसए के कर रहे होते हो। एक्सप्लेनेशन फिर वहां पे मैटर खाली डीएसए नहीं करता, वहां पे मैटर करता है कंप्यूटर फंडामेंटल्स भी, कि आपका कंप्यूटर नेटवर्क कितना स्ट्रांग है, डीबीएमएस, और क्या बोलते हैं, डीबीएमएस ऑपरेटिंग सिस्टम कितना स्ट्रांग है, क्योंकि डायरेक्टली आपसे कोई नहीं पूछने वाला कि एरे को शॉर्ट करो, आपको घुमा देगा। वो बोल देगा ये कंप्यूटर नेटवर्क से, ठीक है, ये कंप्यूटर नेटवर्क में एक सिस्टम ऐसा बना रहा हूँ, मेरे पास 4 नोड है, अलग अलग राउटर से हैं, और मेरे को क्या करना है कि ये राउटर से वो राउटर का शॉर्टेस्ट पाथ देखना है, सो दैट मैं यहाँ से वहां पे डेटा ट्रांसफर कर सकूँ।
अब आपको ये पता होना चाहिए कि भाई कैसे ट्रांसफर करते हैं। शॉर्टेस्ट पाथ के एल्गोरिदम क्या है, ग्राफ की एक एल्गोरिदम होती है, डिजिट डिजकस्टर एल्गोरिदम। वो लगाओगे तो इनडायरेक्टली वो राउटर का जो भी पाथ वगैरह निकलता है। तो ऐसे करके इनडायरेक्टली आपसे पूछा जाता है। आपसे डायरेक्टली कोई नहीं पूछने वाला है सीधे क्वेश्चन, ये एरे को शॉर्ट कर दो या ये बाइनरी सर्च का ऐसा कुछ, ये सब नहीं आता। ऐसा कुछ है। और फिर क्या था भाई आज दिन ये, हाँ, और ये जावा में से जावा बता ही दिया भाई। सिस्टम डिजाइन कहाँ से पढ़ना है, सिस्टम डिजाइन का यार ओवरऑल पूछोगे तो एज अ फ्रेशर की बात करी जाए तो तुमसे, अगर तुम स्टार्टअप को टारगेट नहीं करते तो तुमसे बेसिकली लो लेवल डिजाइन पूछी जाएगी। और लो लेवल डिजाइन के लिए तो एक कोडर आर्मी करके चैनल है, आप वहां से पढ़ सकते हो। भैया डेवलपमेंट की तरह जाना चाहिए या गवर्नमेंट एग्जाम? भाई साहब, गवर्नमेंट एग्जाम की तरफ तो मत ही जाओ यार, क्योंकि साला उसमें इतनी ना भीड़ है कि भाई कोई लिमिट ही नहीं। और बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि भाई बहुत लोग तो अपनी लाइफ ही खराब कर देते हैं उस चक्कर में। तो गवर्नमेंट एग्जाम तो मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि वो बहुत ही फर्जीवाड़ा है। मतलब टाइम बर्बाद है। और एक तो इतना कंपटीशन है साला, फिर कुछ होता भी नहीं है, पता नहीं क्या सीन है। अपना देखो, अपना कैसे डेवलप करोगे अपने डेवलपमेंट नहीं करना है तो डेटा इंजीनियर रोल के लिए कितना डीएसए चाहिए होगा फॉर प्रेशर? डेटा इंजीनियर रोल के लिए मतलब एक नॉर्मल डीएसए तो चाहिए होगा कि आपसे मीडियम क्वेश्चन बन पाते हैं लीड कोड के इस लेवल के। और उसके बाद भाई फिर वो तुम डेटा इंजीनियर में अलग अलग जो चीजें हैं, नंपाई पांडा वगैरह और क्या क्या है उसमें, क्या बोलते हैं, सीक्वल भी तुम्हें आनी चाहिए, उसकी क्वेरीज भी पूछते हैं, फलाना ढमाका बहुत सारी चीजें हैं। मतलब एक टॉपिक पढ़ लो, सिंपल, क्या एक साथ सब पढ़ लो, फिर टॉपिक पे क्वेश्चन ना हो या रैंडम, मैं डीएसए कैसे पढ़ूं? Just following a sheet after reading only topic। तो ऐसा कर सकते हो कि टॉपिक पढ़ लो, टॉपिक पढ़ने के बाद 7-8 क्वेश्चंस लगा, ठीक है, 7-8 क्वेश्चंस एक टॉपिक के। अब जैसे एरे है, एरे के अंदर प्रीफिक्स सम है, और उसकी एक एल्गोरिथम बाइनरी सर्च हो गई, उसके बाद टू पॉइंटर्स हो गया, स्लाइडिंग विंडो हो गया। ये सब करने के बाद आई वुड सजेस्ट कि स्ट्राइवर की भी शीट फॉलो कर सकते हो, और एक नीट कोड की भी शीट है। तो नीट कोड की भाई 250 वाली कर, 250 में ओवरऑल आपको पता चल जाएगा कि एक टॉपिक से क्या क्या वेरिएशंस है। ये 250 कंप्लीट करके खेल खत्म, ठीक है। तो ये 250 करने के बाद अब तुम्हें पता चल गया कि भाई ये टॉपिक है, और ये टॉपिक अगर आता है तो इसका बेसिकली ये पैटर्न है। तो जब तुम्हें पैटर्न अब पता चल गया, अब भाई कोई जरूरत नहीं है टॉपिक वाइज करने की, क्योंकि इनडायरेक्टली वो कहीं हेल्प नहीं करने वाले। फिर आप जाओ भाई, लीड कोड के जो वर्चुअल कॉन्टेस्ट पड़े हुए हैं पुराने, वो कॉन्टेस्ट उठा के देना चालू करो, और उसमें पकड़ो कि अब मैं पैटर्न कैसे ढूंढूं। क्योंकि वहां पे जो क्वेश्चन आया उसमें पता तो है नहीं कौन से टॉपिक का है। तो बस अब उनको देना चालू करो और पैटर्न ढूंढना चालू करो, क्योंकि वही इनडायरेक्टली हेल्प करेंगे। और उसके बाद फिर आप साथ में कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग भी चालू कर सकते हो। तो कोड फोर्सेस और कोड शेफ के जो कॉन्टेस्ट होते हैं वो दो, उससे पता चलेगा कि भाई मैथमेटिकली कितने स्ट्रांग है। यही सब तरीके हैं। मतलब मैं तो नहीं किसी को ये बोलूंगा कि भाई ये वाला काम करो कि टॉपिक वाइज क्वेश्चन करो, क्योंकि ऐसा तो कहीं नहीं होने वाला। चाहे इंटरव्यू ले लो, चाहे कॉन्टेस्ट ले लो, कि आपको टॉपिक मतलब उसमें दिख जाए कि यही टॉपिक लगना है। Brother, I subscribe you. I will keep talking whatever I need branding. I expect for you. Thanks, buddy. Thanks for subscribing. Thank you so much. ये ऐसा कुछ है। Thanks, bye for clarity. वैसे एक टॉपिक पकड़ के क्वेश्चन कर रहा था। मतलब कर सकते हो कि एक कोई पर्टिकुलर, बस जान जाओ कि हाँ भाई ये टॉपिक है टू पॉइंटर, और इस टू पॉइंटर के कुछ क्वेश्चंस लगा लो। अब पता चल गया टू पॉइंटर कैसे कैसे लगता है। अब छोड़ दो भाई, कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि पता तो चल ही गया कि कैसे लगता है।
तुम इनडायरेक्टली उस पे टाइम भाई दिन में कितने कितने डीएसए करना चाहिए, कितना टाइम डीएसए करना चाहिए, इट्स टोटली डिपेंड अपॉन पैशन भाई। कितना इंटरेस्ट है, अगर मैं मान लो कि अभी तुमसे कह देता हूँ कि भाई 12-15 घंटे करना चाहिए, लेकिन तुम्हें इंटरेस्ट ही नहीं है, तो तुम कभी करोगे? नहीं करोगे। वो वाली चीज है। ये चीज है कि आप कोई भी चीज करो, उसको पैशन से करो कि हाँ भाई ये मेरे लिए सब कुछ है, तो आप इनडायरेक्टली उसके मास्टर बन जाओ। डीएसए और वेब डेव दोनों। डीएसए कंपनी में घुसने के पहले, और कंपनी के में घुसने के बाद वेब डेव, तो इनडायरेक्टली दोनों में से आप कुछ भी नहीं छोड़ सकते। देते, आई मीन आर, ओके, आई हैव 6 hours a day। हाँ, तो मेरे हिसाब से ये है कि आप मेजर फोकस, अगर आपके पास टाइम है तो मेजर फोकस प्रॉब्लम सॉल्विंग यानी डीएसए पे दो, क्योंकि बेसिकली वही इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू क्रैक करने के लिए। ठीक है, और डेवलपमेंट तो ऐसी चीज है कि आप भाई 1 महीने में उसको निपटा दोगे, 1-2 महीने में निपटा के उसका प्रोजेक्ट बना दोगे, तो इंटरव्यू में वैसे भी आपको डीएसए पूछने वाले हैं, वो क्रैक हो जाएगा। ये जो डीएसए का बैकअप पेपर, क्या बैकअप पेपर है कल? अरे वो जो कॉलेज में जो डीएसए पढ़ाई है वो कुछ नहीं पढ़ाई है। वो डीएसए और ये डीएसए, इन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। वो मतलब उसका तो बस कथा बताई होगी, वो कथा से कुछ लेना देना नहीं है इधर। मैंने भी कॉलेज की डीएसए पढ़ी थी, उन्होंने बाइनरी सर्च बताया था कि बाइनरी सर्च सर्चिंग में यूज होता है। वो कहाँ होता है ये नहीं पता। अभी इसमें बहुत सारे दुनिया भर के ऐसे क्वेश्चन है, पता ही नहीं चलेगा बाइनरी सर्च लग रहा है। जावा डेवलपमेंट 1-2 महीने, व्हाट ब्रो? इंटरव्यू में नो चेक फॉर इफ सम इज लेस देन नेगेटिव। अच्छा ये वाला, if I would check that if sum will become negative. No check for if sum will become. So if sum become okay, so I will return false at that time, right? If sum is less than 0. मैंने टॉपिक पढ़ा नहीं है, और भाई ने पूछा तो मैंने रैंडमली उठा के करने लग गया, क्योंकि मेरे को बस कॉलेज का याद है कि कितना पढ़ूं भाई। ये फिर भी गलत है, वो खैर मैं बाद में देखूंगा, अभी पढ़ा ही नहीं है तो मेरे टॉपिक कर नहीं सकता इनडायरेक्टली। बात ये है कि मेरे को पता ही नहीं इसमें क्या क्या कॉन्सेप्ट है। और ये है कि इट वुड टेक एटलीस्ट 1 मंथ, उसके बाद मे बी मैं ट्री पे पहुंच जाऊंगा। अभी बाइनरी सर्च पे पहुंचा हूँ, उसके बाद फिर शायद स्ट्रिंग वगैरह जो भी चीजें इंटरव्यू में आ दूंगा फिर। अरे नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं होता। जा, ऐसा कुछ नहीं है। कितना पढ़ू भाई, कौन से कॉलेज का है? मैं तो यार एक टायर 3 कॉलेज का हूँ, उसका नाम नहीं लूंगा क्योंकि वो मेरे को पैसे नहीं देता। ठीक है, प्रमोशन के लिए। और कितना पढ़ूं, इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू कि आपको करना क्या है लाइफ। ठीक है, आपको ये खुद डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको करना क्या है। तो जब आप देखोगे कि मेरे को ये करना है, तो उसके लिए आपको कितना पढ़ना पड़ेगा वो आप खुद डिसाइड कर सकते हैं। लाइक बहुत लोग ऐसा करते हैं कि वो देखते हैं कि भाई ये क्या कर रहा है, मैं भी वही कर लेता हूँ, पर इनडायरेक्टली वही है कि आप देख के कर तो लोगे, लेकिन कब तक? हम्म चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बाइनरी सर्च का वो तो हो गया लॉन्गेस्ट। अरे ये कहाँ पहुंच गए? अरे नहीं नहीं, ये सब नहीं, गलत साइड पे आ गया, सॉरी। हम्म आड़ा तिरछा सा कुछ बाइनरी सर्च का भी क्वेश्चन आ जाएगा तो मेरा भी उड़ जाएगा एकदम से, क्या करूं मैं? सो अभी कौन सा क्वेश्चन किया था? वी हैव कंप्लीटेड दैट, व्हाट position, last position is greater than equals to mean, basically can place balls, right? Now the next question would be coco eating banana. So
we have already covered that Coco eating banana, or will I have to explain it? Can you please explain the question? Okay. So this question. So okay, it is given that there is a monkey named Coco, and what it is given in the question, there are n piles of banana. So what is this piles means? So basically, uh, केले का गुच्छा ले लो भाई, ठीक है, ऐसे करके. सो ऐसे करके बनाने का गुच्छा है. बेसिकली इसको हम लोग पाइल्स कहते हैं. ओके, पाइल्स. सो इट इज गिवन इन द क्वेश्चन दैट ये नोट्स कौन से हैं? अरे ये मेरे खुद के नोट्स, ये मैंने खुद बनाए हैं. So there are n piles of banana, and the ith pile has pile I banana. It tell that we have given an array, and an array has some index. And suppose if I standing on zeroth index, it will tell that in a zero pile how many banana I have. Uh, how many banana I have? Oh, that's good. Okay, so it will be three. Okay, so it is given that there are suppose four boxes, right? There are four boxes, and in four boxes there are 3, 6, 7, 11. 3, 6, 7, 11. So there will be three bananas, there would be six banana, there would be seven banana, and there would be 11 bananas. So basically, if I consider this pile, it would be either 3, 6, 7, or 11. Yeah. So, right. So what also it is given in the question is the guard has gone and will come back in H hours. So it is something here. It is given that okay, H is equals to 8. So what is this H? So to mera what? Okay, so we have given H. So what is this H? H will tell me that there is a ground, right? There is a ground. Inside that ground, there are many banana trees. Okay, banana trees basically, whatever the trees. I don't know. Okay, so there is a card, and it has some duty, right? It has some duty, and he will take a break from the duty for at least 8 hours. According to that question, he will go for 8 hours. And now there is a monkey. Okay, there is a monkey, and this monkey has 8 hours. Okay, so basically this monkey has only 8 hours, and we have to tell that there are four trees. Suppose four trees, and on four trees there are some banana like 3, 6, 7, and 11. And now this monkey wants to eat all of this banana, right? All of this banana. And I have to tell that what is the speed of a monkey from which that she will eat so that it can finish all the bananas in 8 hours, right? So this is the question. So what we actually have to do is that there are three bananas, six bananas, seven banana, and 11 banana on different trees. And at one time, they can eat all the bananas from a single tree. It is also given in the question that Coco can decide her bananas per hour eating speed of K. Each hour, she chooses some piles of banana and eat K bananas from that piles. If the piles has less than K bananas, she eat all of them instead and will not eat any more banana during this hours. So Coco like to eat slowly but still want to finish eating all the bananas before guard return. Return the minimum integer K such that she can eat all the banana within H hours. So it is given in the question that with some speed she can eat all the bananas, right? So what I want to return the minimum speed so that because Coco is lazy, so what I want, she can eat the banana with the minimum speed so that she can
finish all the banana within just 8 hours. So what is that minimum speed? So I don't know what is the minimum speed. Okay, so I have to check. So what is the brute force approach? As I don't know anything, I will start a loop that first I will consider, okay, the speed will be 1, right? I will check will Coco eat all the banana with the speed of 1 or not? So if Coco tries to eat banana with the speed of 1, she can eat the 3 bananas in 3 hours, right? Then for 6 banana in 6 hours. So this will become 9. So what I observe here is that with the speed of 1, she will take 9 hours to eat only 2 sections, but she wants to eat all the sections. So if she would take 9 hours to eat only 2 sections, how many hours I have? I have 8 hours. So with speed of 1, there is no way she can eat all the bananas, right? So I can increase the speed. So it will become 2. Now, with the speed of 2, how many hours it would take to eat all the banana? So, how many hours? Okay. So, if in 1 hour she eat 2 banana, I have three bananas, right? So, in 1 hour it would take, okay, with the speed of 2. So, what I have to do, I can divide it. Okay. So, if I divide it, what I will get? I get 1.5. It means that if Coco tries to eat banana with the speed of 2, it would take 1.5 hours to eat this piles, this section. So it is given in the question that uh, if the piles is less than k banana, she eat all of them instead and will not eat any more banana during this hour. Okay, so basically it is given in the question wait. It is given in the question that if she eats the banana in 1.5 hour or 1.7 hour or whatever, okay, we have to return the seal value. Like what is the maximum hours she will take to eat that amount of banana. So what is the seal value of this? So this will be 2, right? It's not 1.5, it will be 2. So if she eat with the speed of 2, she can eat 3 bananas in 2 hours. After that, I have 6. So for 6 bananas to eat, it would take at least 3 hours. And now if she would want to eat 7 bananas, it would take 3.5 hours. But for 3.5 hours, we have to take the seal value, which will be 4. So 4 plus 3, which is 7, plus 2, which is 9. Again, it crosses the limit. Again, it crosses the limit because I have only 8 hours and she can eat only 3 sections with the speed of 2. So it means that this is also not the correct speed. Now again, I will increases the speed. Now I will become 3. So with the speed of 3, she can eat 3 bananas in 1 hour, then 6 bananas in 2 hours, then 7 bananas in 3 hours, and then 11 bananas. So 11 bananas is how many hours? It will be 4 hours. So 4 plus 3 plus 2 plus 1, which will be 10, and it would be greater than what? 8. But I have only 8 hours, and she would take at least 10 hours to eat if she eat with the speed of 3. So it means that this is also not the correct speed. So I again increases the speed. Now, again, it would take 1 hour. Then for 6, it would take 2 hours. Then for what? Then for 7, again, it would take 2 hours. Then for 11, it would take 3 hours. So 3 and 2, which is 5, and 2, which is 5 and 2, which is 7, and this is 8. So with the speed of 4, she can eat all the bananas within the given time. So I would check, okay, can I increases the speed? So will I increase the speed or not? No, because I know that if I increases the speed, then it will become speed equals to 5. And with this will be greater than the previous speed. And what it is given in the question is, I want to return the minimum speed.
with which she can eat all the banana is in given hours. So what I will return? I will return 4. So if you see here, I will get the answers to be a 4. That the minimum speed will be 4. Right? So this is the brute force approach. And basically, if we consider the time complexity, one loop for I is equals to 1, that she can eat the banana with the speed of 1. And what is the maximum speed? So what is the maximum speed? So it is given in the question is that she can eat only one piles at a time. So max to max, the speed of eating is the maximum element of the array. Because if in one time she can either eat a three piles or a six or seven or 11, max to max. Okay, so what is the maximum possibility? That if she wants to eat the maximum amount of banana in a given time, so she will start with 11, right? Of person, should I share or you will do it yourself afterward? Yeah, I will do it afterwards. If you solve this, that's good. Basically, I have not completed the topic yet. I have only studied this topic in college and I'm not revising it anymore. So it would take when I revise all the concept, then I will try it again. So yeah. So the maximum speed that she can get would be the maximum element of the array. So it means that there is a loop which starts from 1 and goes to 11, and for each uh, big of k, no, I don't think so, because I have to run another loop which traverses over each of the element from I is equals to 0 till I is equals to n, and then for each element, what I will do, I will calculate that what is the total sum. So what is this sum? Basically, how many hours it would take. So I will take the num psi, okay, num psi, and divide it with the speed that I have. So I will divide it with the speed, which is will be I, and I will check if that sum crosses what? H hours. So I will break that. This is not possible. At some point, I will get the answer. I will return it. So still you managed approach that question like 70. That's commendable. Thank you so much, buddy. So it would be K into N. K into N. Right. So this will be the time complexity of this approach. Now, okay, so this will this be the optimal approach? No. So one thing what I observe is that I have seen here that if I start with the speed of 1, she will not eat. She will not eat all the banana. With 2 also not eat it. With 3 also not eat it. With 4 also not eat it. And then there is some threshold point come. Okay, with 4 she eat it. Then there is some threshold point come, and after that, all answer is possible, right? All answer is possible. Like with the speed of 5, she can eat all the banana. With the speed of 6, also she can eat all the banana. It means that I will take some particular value and I will check that if she eat with that speed, then all the speed that is greater than that speed, she can also eat with that speed also. So it means that if I get 5, so suppose if I consider this and I got 5, if she eat with the speed of 5, I know that she can also eat with the speed of 6, 7, 8, up to 11. Right. So it means that I can just remove this space because I don't want to search in this space because what I want the minimum speed. So I can only left with this space. So what I've seen here is that in one iteration, I can reduce half of the search space. So there is some intuition of binary search, first of all. Secondly, thing I have to search, I have to apply this binary search in some search space. So what is that search space? So for that search space, what I know.
If Coco is starting eating banana with some speed, the minimum speed that she would get should be 1, right? And after that, what I know, at a single hour, she can eat only one piles of banana, like one section. Either she would eat three banana or a six or seven or 11. So what is the maximum pile she can eat in 1 hour? So maximum piles that she can eat in 1 hour should be the maximum of the array. So it would be 11. So it may so what I understand here is that the speed is never more than the maximum element of the element. Sorry, maximum element of the array. So right. So I got the search space from 1 till 11, and if I see this, this is monotonically increasing. So if this is monotonically increasing, and I already know that okay, I can reduce half of the search space in each iteration. It means that I can apply binary search. Right, I can apply binary search. So I got the start, I got the end, and after that I will find the mid. After finding mid, what I got? 11 plus 1 which is equals to 12 and divided by 2 I got 6. Now I will check with the speed of 6 will Coco eat all the bananas. So what are the values? 3, 6, 7, 11. So 3, 6, 7 and 11. Right. Why do binary search from range 1 to max element of the nums and then move towards high end? If the speed is less, if it is less, check if you get less speed, then that you never can narrow down. Yeah, yeah, yeah. Right, right. Okay, so what I will do, I will start iterating from this. And now I will calculate the R's, that how much R it would take. So if the speed of 6 she can eat, I got 3 by 6 and I have to take the seal value. So it would be 1. And then I got 6 by 6, which is plus 2. And then 7 by 6, which will be plus 2. And then 11 by 6, which is plus 2. Right. Basically 6 by 6 or 6 by 1. Okay, this will be 1. And this will be 2. And this will be right. So what if I count the total hours it would take? So total hour it would take would be we check from whenever we need to move towards the this. Uh, what? We check for mid element whenever we have to move towards left. We store the index. Yeah, yeah. We store the index, not storing the index. Basically, we storing the mid value. That yeah. So I would see that yeah, 2 and 2, which is 4, and 5 and 6. Okay, so in 6 hours, I will eat. So basically, Coco will eat all the bananas. So I will see that okay, 6 is less than what? 8. So this is the possible answer. So as this is the possible answer, I reduce my search space. So as I reduce my search space, so start will become 1 and end will become 5. Now again, I will find the mid value. After finding the mid value, I got 3. For 3, maybe I will not get the answer because I will see that, okay, if I divide 3 by 3, I got 1. If I divide 6 by 3, I got 2. If I divide 7 by 3, I got 3. And if I divide 11 by 6, I will see that I got value greater than 8. So with the speed, this is not possible. So what I will do, I will again reduces the search space and move start at 4 and end at 5. Again, I will find the mid value and it would be 4. Again, I will find the mid value and it is equals to 4. With 4, I will check again. So 3 by 4, which will be 1. 6 by 4, which will be equals to 2. 11 by 4, which will equals to 2. And 11 by 4, which is equals to 3. So this would be basically less than equals to 8. So I will return true. Yes, this will be my possible answer. I will store it. And now what I will do, I will minimize the speed. So to minimize the speed, I will move end is equals to. So basically start is equals to 1. Start is equals to 4 and end is equals to mid minus 1, which is equals to 3. So if I see here that start will be greater than end, it means that my loop is over and I return that this is my possible answer.
So let's perform this. So int start is equals to 0, not 0, not, no, 1. And int uh, end is equals to max element, and nums dot begin, comma, mm, nums dot end. I will change the variable name for writing the logic. And answer is equals to start, and then while uh, start is less than equals to n, int sorry, int mid is equals to start plus n minus start by 2, and then I will check if with this answer is possible or not. So is possible, and I will pass here nums mid and then whatever the R that I have given. And if this answer is possible, I will store it. And now as I want to minimize, and it's equals to mid minus. And else what I will do start is equals to mid plus 1. I will return the answer. Hmm. So return the answer. Now we'll create bool is possible, and int mid vector int and nums and int r, right? And I will create a sum variable, or basically HRS variable, which will store that how many r's. So for int, I will iterate over the nums array. And now what I will do, I will calculate that how many r's I have completed. So how will I calculate the r's? So I will take x and divide it by what? Divided by mid. So what I want the seal value. So if I want the seal value, then I can directly use the function seal, but this seal function will return me the double. But I want to store the integer. So how can I find the seal value without using the seal function? It will be जो जिससे भी divide कर रहे हैं. Whatever the variable that I use for dividing, I just add that variable and subtract one from it. This will also give me the seal value, right? So after finding the R, I will check if somehow my R's will be greater than the threshold. So I will return false because the cocoa with this speed will take much longer R than expected. So return false, right? And otherwise return true. Return true and nums. That's it. I think so. This will work. Oh, what the hell? Ah, king. Yeah. Now it's mid minus. So this is accepted. Uh, this is the solution. Hmm. So we have completed this. Calculate total वगैरह जो भी चीजें है. Hmm. Video. Okay. So, hmm. Hi. Median of two Saturday. इसमें भी बाइनरी सर्च लगेगा. आई डोंट नो कैसे, बट लग जाएगा. ठीक है. और
like that. Okay. So what is the question? It is given that given two sorted array. Okay. It is already given that this both arrays are sorted, right? Nums1 and nums2 of size m and n return the median of two sorted array. So basically, what is the median? So if I see here, suppose there are one, two, three, four, five. So if there is odd length array, right? Odd length array, then whatever is the mid value, like here it is 3, this will be my median, right? This is my median. So if someone said that what is the median of 1, 2, 3, 4, 5, so it would be 3, right? Now, if the array is of even size, like 1, 2, 3, and 4, what should be the median? So median should be whatever the element that is present at mid and whatever the element that is present at mid plus 1. I will take both the element and divide it by 2. So whatever the answer that I will get, like suppose if I get 2.5 here, this would be my median. So this is one of the concept. So if I want to find the median and if the length of the array are odd, so the median is the center element, and if the length of the array is even, then median will be the summation of mid and mid plus 1 divided by 2. So it is given in the question that there is an array. No. Oh, wait. This is not the question. Where is the question? So it is given that there is an array 1, 2, 3, 4. And what I have to do is, I have to return what is the median of two sorted array, right? So if I see here 1, 2, 3, 4, so I will write 1, 2, 3, 4. So basically, both arrays are different. So how will I find the median? So the basic approach is I will create another array, 1, 2, 3, and 4, and store all the elements. Because they are sorted, there is no problem. It is already sorted. So I will store 1, 2 here, and after that I will store 3, 4 here, right? And after storing 3, 4, what I will do? If somehow, suppose if there is 1 and 4, and there is 2 and 5, 2 and 5, right? After storing it, I got 1, 4, 2, 5. So this is not sorted, right? This is not sorted. So what I will do is that after storing it inside the another array, I will again sort this array. I will again sort this array, and after that I will check what is the length of this array. If the length is odd, then what does it mean? I have to return the mid value. And if the length is even, what I will do? I will return the mid plus 1 divided by 2 and whatever the value I will get. So let's do this. So what I will do? I will create another array, vector int, an answer, and for int x nums1, I will store answer dot push back, and I will store all the x. Okay, and similarly like that, I have to write 4 here, int x, and nums2, I will push x here inside answer. After that pushing, I will short it. Short nums dot, sorry, not nums, answer dot begin, answer dot begin, comma, answer dot end. And after that, I will check. What I will check? Int n is equals to nums, sorry, answer dot size, answer dot size. If I see that if this answer modulus 2 is equals to 0, what I will return? I have to return this is even now. So basically, if this is even size,
what I will do, I will take the nums mid. So how will I find the mid basically? Yeah. So it mid would be n by 2, right? And after that, I will add what? Nums of n by 2 plus 1. And after taking both the values, I will divide it by 2. And else, otherwise, what I will do? Okay, after divided by 2, hmm, and if I get the odd size array, I will return only the nums of n by 2, right? And I will return here, return 0 here, 0.0. So basically, I can multiply it with 1.0 also because this is integer. I will return, I think so, double, right? Yeah. So here I think so, get double. I can multiply it 1.0 also. Yeah. What nums? Oh, it would not be nums, it would be answer. Hmm. I got the wrong answer, it would be 3. So, what's wrong? I will combine n by 2 and n by 2 plus 1. And after dividing it by 2, 2.0. I not multiply with 1. Basically, I can divide it by 2.0. Hmm, what's wrong? How I got 3.5? 2 plus 2.5, right? So n by 2, I will get the size and I will see, okay, this will be even. So what is this? 4. 4 by 2, 0, 1. Okay, so what I have to take n by 2 minus 1 and n by 2. Then it will be accepted. Okay, I have to take, uh, okay, what accepted? But how it would be accepted? Okay, because take log n time, right? That's why it is accepted. So this is one of the approach, and basically, I've done something wrong, or maybe I will explain something wrong. Like if I see that n is equals to 4, I would take this element and this element. So if I see that if I find the mid 4 by t, which is equals to 2, so yes, basically this is 0 and this is 1, this is 2 and this is 3. So what I would take the mid element and mid minus 1 element and then combine them both uh, to get the to get the median and divide it by 2. So there is one more approach, but uh, I would explain it tomorrow. Sorry, guys, but I have some health issues and I have some body shivering, so that's why I want to take a break. So that's why I will explain it tomorrow. Sorry, guys. Sorry. Thank you for joining and connecting. I will meet you tomorrow. Till then, take care. Bye bye.